1979, the International Union of Conservation. And International Union of Conservation expressly expressed the concern about the plight of the tigers and elephants, etc. And that was a time Mrs. Indira Gandhi very famously said in the conference that we do not need foreign exchange. We do need foreign exchange, but not at the cost of life and liberty of some of the most beautiful inhabitants of this continent. And that set the ball rolling, and eventually the task force was set up, and that paved way the the Wildlife Protection Act 1972. And this act, despite of probably today's age, it is maybe little imperfect in many ways, but is essentially a very progressive law. Because this is the law that actually banned hunting of wild animals, created protected wildlife habitats, allowing our wild treasures to grow, survive, and flourish. And this is the very act that created the parks and sanctuaries and reserves. This is the act that set up the National Board for Wildlife. This is the act subsequently when Project Tiger and Project Elephants were set up, and the wildlife managerial practices were ruled. So this is very important law, and I am very happy that these particular amendments are brought in. Some of the amendments are, of course, very necessary. The prominent among them are the prohibition of renewal of arms license within the 10-kilometer radius. That is very much needed. And also to regulate the international trade, the CITES trade, that is very important. I think this is welcome. And the surrender of wild animals and products, among other things, the regulation of invasive plants, then reorganization of CIDLs, and of course the other things. Those are very important. But having said all these, I would like to point out the fallacies and anomalies even in the CITES. We all know the CITES actually among 38,700 species of animals and wild animals and plants. The CITES organize and they regulate all the rules among the member countries. But there are also fallacies. I would like to point out, in Assam, we have a plant called agarwood. The botanical name is Aquilaria melacensis. Because of the climatic condition, because of the very conducive soil condition, the Assam agar has got a huge brand equity world over, especially in the Arab and the Middle East. But CITES has included that Assam agar, that in the list. As a result, sir, you would be surprised to know that Assam, this agarwood is growing abundantly in the homestead lands. It is not available in the reserve forest and wildlife areas. But Assam agar is grown all over the places, at the backyard of the houses, the homestead lands. But the people and the state are not getting the legitimate and the legal remuneration because of that. And so you'd be surprised to know that Assam agar is being smuggled out, hoodwinking the system because of the CITES embargo. So it is very important that this kind of fallacies should be removed from the CITES, and I would request the Honorable Minister to look into this matter and arrange to remove the Assam agar from the list of the CITES. Similarly, there are other things like regulation of invasive species, which is very, very important because we have to protect the habitats. For example, Kaziranga National Park is known world over because the rhinoceros and other herbivores are dependent on the grassland. But in the tea industry surrounded the Kaziranga National Park, they at one point of time, they introduced this mimosa plants because mimosa has got antibacterial qualities. But mimosa is very prolific, and this mimosa invasion has almost on the verge of killing the grasslands. So that is why the regulation of the invasive plants is a very important thing. If necessary, those invasive plants or weeds should be culled and eradicated and removed to protect our wildlife. And we are coming to a very sensitive subject called elephant. Of course, elephant is very much here. The standing committee also has referred, and standing committee has asked
for a very careful balance between the traditions of our society and conservation. So there are about 16 states in our country who actually have habitat of elephants. And as per the Wildlife Institute of India data, that we have probably 28,000 to 31,000 elephants. But latest data is not available. That data is as old as 2012. I also note that your ministry asked different state governments to give the data, because we have 30 elephant reserves. Unfortunately, those information are not available. So this information should be updated. We have to know that what is the exact number of elephants that we have in our country. And so, having said that, tradition and all, so elephants actually grow in a particular habitat. Elephants don't really grow in some other anti-friendly, non-friendly environment. But we have record that about 320 elephants were taken out of Assam with permission on record. But we do not know how many elephants have been taken out from Assam. And we are told that these elephants are transported to various places, some temples in South India, and a large number of elephants have been taken to Jamnagar by a prominent industrialist of India. Please conclude. Actually, you have three other speakers. But what I'm basically trying to say, these elephants grow in a particular environment. That scientific study has to be made whether the elephants can survive in a non-friendly, anti-friendly, in atmosphere. And that is very important, that human-elephant conflict that we have, that is on the rise day by day. A large number of human and cattle and crop loss has been recorded because of the shrinkage of the natural habitat of the elephant, because of the biotic pressure, because of the fragmentation of the reserve forest, the shrinkage. But that elephant habitat has to be protected, and that is where the traditional knowledge also has to be combined. So you would be very surprised to know that elephant command, the domesticated elephant, is a part of our tradition. And that tradition was very good, and that elephant command, even vocabulary, traveled to Thailand and Cambodia and Southeast Asia, same language. And in the 18th century, the elephant treatise was compiled in Assam. It's called Hasti Biddar Nava by Sukumar Borkait in the 18th century. And it precisely gives how the elephant should be preserved, how elephants' habitat should be protected. But in that entire thing, we also had two domesticated elephant measures like Mela Shikar and Kheda Shikar. Shikar is a misnomer. Shikar doesn't mean that elephant hunting takes place, but it actually creates a data. It also tries to minimize the human-elephant conflict. But that has been eradicated, that has been uplifted. So that is why it is very important that traditional knowledge should be combined with the present-day managerial practices of wildlife. Thank you, sir. Thank you. Shri Kirtivardhan Singh. So I'd like to express my gratitude for allowing me to speak in the support of this very important bills. So it's a matter of grave concern that our environment is deteriorating at a very alarming rate, and we have been experiencing in the past decades a spate of natural disasters which are due to the climate change that is being caused. So it is also a matter of pride for us that under the effective leadership of our Prime Minister, our government has undertaken a wide range of mitigation and adaptation measures, and India is now leading the world in this fight to save the environment. So we are also learning that along with the reduction of greenhouse gases and other pollutants is the conservation of our precious wildlife, our flora and fauna, and the health of our ecosystem, which play a vital role in the preservation of our environment. So it's a fact that nature does not have any political boundaries. सर जब ब्राज़ील में फॉरेस्ट जलाए जाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे साउथ वेस्ट मानसून पे पड़ता है. So it is a collective responsibility of all governments to take preventive measures for the protection of the ecosystem. It is the existing interdependence of these species for their mutual survival and the continuity of this chain which is vital for our environment, sir.
and it is important to maintain these linkages. And there are various examples of how the destruction of just one species has disturbed the ecological balance of the entire region. So it has taken millions and millions of years for nature to achieve this perfect balance. But sad to say that jo hum log hain, our humankind, our human history, which is only 200,000 to 300,000 years old, we have emerged as the prime disruptor of this balance. We are paying a very heavy price for it, sir. But it is also a matter of concern that जो हम लोग के future generations होंगे, उनको कितनी heavy price pay करनी होगी, इसको हम लोग अभी quantify नहीं कर सकते हैं. आज जो हम लोग का green climate bill है, it runs into billions and billions of dollars. आगे what will happen, nobody knows, sir. So it is with a great deal of foresight that our Parliament had passed the Wildlife Protection Act in 1972, which basically provides the legal framework for the protection of various species of wildlife, wild animals, and the management of the habitat and regulation and control of also the trade in wildlife and wildlife products. The 42nd Constitutional Amendment Act in 76 further shifted the subject of protection of wildlife and birds from the state list to the 7th schedule in the current list. Sir, आजकल जो one of the major threats to wildlife है, it is this illegal trade which our former speaker just mentioned. And this illegal trade is mainly due to many superstitious beliefs. Sir, हम लोगों के टाइगर की हड्डियां आज चाइना और नेपाल बेची जाती हैं. वो हमारे हिमालयन बेयर का पिटीटी ग्रैंड आज बहुत डिमांड में है. मस्ट डियर के मस्ट ग्लैंड्स डिमांड में है. एंड देयर मेनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ग्रेटर हिमालयन रीजन में. देयर वेरी मेनी वैराइटीज ऑफ मशरूम्स व्हिच आर इलीगली स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री. So the CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, was constituted in 1975, and it actually regulates the trade in over 38,700 species of wild animals and plants. And one of the requirements of this convention is that all member countries take appropriate measures to enforce its provisions and prohibit trade in the violation of its framework. So we became a party to this convention in 1976, and as our Honourable Minister informed us, India has been implementing the various provisions of CITES through the Customs Act of 1962, the Foreign Trade Act, the Exim Policy, and the Wildlife Protection Act of 1972. But however, the CITES Standing Committee, it found certain gaps in the implementation of these provisions. And one of the serious repercussions was that a recommendation was passed with respect to India to prohibit trade in the CITES listed species. So India has considerable exports of such species, such as agarwood, red sanders, medicinal and aromatic plants, wood, and other wood products. And this recommendation would have an adverse impact on our exports and also on the lakhs of people who are engaged in such agroforestry and similar activities. And of course, the majority of these people engaged in such activities are generally the tribals, the village communities, which also constitute a large percentage of our economically, socially marginalized sections of our society. So it was the main concern of our government which has prompted this Wildlife Protection Amendment Bill of 2021. And this proposes to amend the Wildlife Protection Act 1972 so as to incorporate these necessary changes for effective implementation of the CITES provisions. So, iske saath saath, there are many other relevant amendments that have also been added. And the first is the amendment to the preamble. So, aaj jo protection of wildlife hai, it has acquired a much wider aspect. Apart from protection from hunting and killing, we also have to focus on protecting the habitats, ensuring of natural fodder, management of forests, and curbing of illegal trade in wildlife. And these broader actions are required today to ensure the ecological and environment security of our country. Therefore, the preamble of the Act is proposed to be amended, and the words protection of wildlife, animals and birds has been substituted by the conservation, management and protection of wildlife. Another important proposal, sir, in this amendment is that till now the endangered and the protected species were placed into 6 categories, 6 schedules, and this was not very clear. And the Principal Act, the list of protected and endangered species, now have been placed into 4 schedules. The Schedule 1 and 2 are for the protected and endangered animal species. Schedule 3 includes the specified plants. And the Schedule 4 lists all the species specified by the CITES.
The government has also added a new Chapter 5B in the Act for the regulation of trade in endangered species of wild fauna and flora. And as per this proposal, an Additional Director General of Forest, the rank of Additional Director General of Forest, will be appointed as the management authority who will be responsible for the issuance of all permits and certificates for trade in the scheduled specimens. So the central government, it is proposed that the central government shall also designate one or more institutes engaged in research on the species as a scientific authority. These bodies with experts in various species shall advise the management authority in matters referred to it and also help to monitor the export permits granted for species listed in Appendix 2 of the Schedule 4. So today, when we talk about invasive species, there are two prime examples I want to place in front of the House. One is the water hyacinth. So this was a plant brought in India in the 18th century by Lady Hastings from South America. Iske phool, purple flowers are very beautiful, and that was the reason this plant was introduced in India. And आज हमारी जितनी भी ज़्यादातर हमारे lakes हैं, जो छोटे rivers हैं, they are being choked by this plant, and it is destroying our freshwater ecosystem. Similarly, sir, the lantana weed, which was also brought in by the British, it is overrunning all our forests, and almost 40% of our tiger reserves are being covered by this weed. It is destroying the natural fodder, and it is also affecting in the Deccan area, the agriculture in the Deccan area. आज हमारे deer species हैं और भी herbivores हैं जिनको natural fodder मिलता था वो अब लंटाना ने खत्म कर दिया है. So the National Biodiversity Authority has identified 117 invasive species in India, which are posing a major threat to the biological diversity in 7 out of our 10 biogeographical zones of our country. So it is very important that these invasive species are curbed, and this amendment will go a long way in helping us to manage these weeds. So the new section 62A in the bill proposes to empower the central government to regulate or prohibit the import, trade, possession, and proliferation of invasive alien species, which are not native to India and whose introduction may pose a threat to wildlife or habitat in India. So along with this, attention has also to be paid that India being such a large country, we have very differentiated ecological zones with their different climates and geography. And we have to be careful about introducing species which are native to our country, but can be alien to the different biozones of our own country. One of the recent examples is that spotted deer, the Asiatic lion, and even elephants had been introduced in the islands of Andamans and Nicobar. And now they are proven to be destroying the ecology of those islands. So attention has to be paid, and with careful study only, that we can transport one species from one part of the country to the other country. So there have always been village communities and forest tribes living either in the forest or around the forest, and they were always dependent on the forest produce and other activities for their livelihood. उनको अपने अगर गाय बकरियां चरानी हो, उनको अगर फॉडर चाहिए, उनको अगर लकड़ी चाहिए अपने खाने के लिए या पानी चाहिए, the forest was the only place where they could go. So the section 29 of the Act amends the earlier provisions which carried penal provisions and now ensures that such bona fide use of forest resources by the local communities shall not attract any penal action. So this is a very welcome step, and it will prevent undue harassment of such forest communities from local authorities, and I want to thank the Honourable Minister for bringing this amendment. So, but simultaneously, to discourage any breaking of rules and violation of the provisions of the Act, the monetary penalties are also being proposed to be increased. So certain other important amendments have been proposed for the better management of the protected areas. In particularly, the requirement of a management plan for sanctuaries and national parks has been prepared in accordance with the guidelines issued by the central government. So management of forests is another very important aspect of wildlife conservation. It includes the population census of animals, the eradication of alien plants, the adequate presence of green fodder for herbivores, and the required foliage density, as well as conditions of water bodies and streams. So the Wildlife Institute of India is one of the premier institutes, especially in regard to tiger conservation.
And such bodies will now have an increasing role to play in the proper and effective management of our forests and wildlife. So a new section 62B has also been inserted, and this proposes to empower the central government to call on any information or report from a state government or any such agency, and also issue directions for the effective implementation of the provisions of the Act. And this will help to effectively manage and monitor all such conservation activities that will be going on in a country. So the concept of conservation of forests has always been a part of our ancient culture and heritage. Sustainability was ingrained in the thought process of the early Indians since the time of the Vedas. And the forests at those times were divided into three categories, mainly the Mahavan, which was the Great Forest Reserve, and today we have more than 100 such reserves in the country. So the Srivan of those times corresponds to all the forest produce essential for the livelihood of human beings and livestock. And so today our country produces an exhaustive range of forest produce such as timber, sandalwood, plywood, kendu leaves, bamboo, sal seed, honey, medicinal plants, rubber and cashew and spices. So the third category in the ancient times was the Tapovan, where the sages resided and no animals or trees could be harmed. And these are our natural sanctuaries, our national sanctuaries of today. So I'm proud to say that under the able leadership of our Honorable Prime Minister of our country, we are gradually reviving our glorious past and culture. And so this bill will prove to be another important step in that direction. I had mentioned earlier that we are leading the world in the fight to protect the environment. And the enactment of this bill will put India in the forefront of the battle to save the ecosystems of our planet. So I would like to congratulate the Honourable Minister for the introduction of this bill, which not only fulfills the provisions of the CITES, but also covers all aspects of conservation, protection, management of wildlife in our country. Thank you, sir. Shri A. Raja. Okay. Thank you, Mr. Chairman, sir, for giving me this opportunity to comment upon the bill, namely the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Sir, way back in 1972, the parent bill, Wildlife Protection Act, came into existence for three comprehensive reasons. One is for protection of wildlife, management of its habitats, and the regulation and trade of animals. After 72, in the year 73 and 79, by virtue of the International Convention on Trade and Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora, party countries like India were pushed to enact some amendments in their respective laws. Accordingly, the Honourable Minister is bringing this bill before the Parliament. Sir, the attempt that has been made by the Honourable Minister is honest, commendable and laudable. In his personal capacity, I know he is a learned man. His prowessness cannot be questioned. Collectively, the government measures are still making so many question marks whether the deliverance is going to be happened or not. Sir, let us weigh the attempt that has been made by the government holistically, irrespective of the measures individually done by the Honourable Minister by way of this piloting bill. Sir, I want to address only few things on legal issues and the role of the states. During your speech, Honourable Minister, you are solely relying upon the convention which was held in 79 and 73 in order to bring the provisions of the convention. As a signatory to the convention, you want to bring this law. But forest is being maintained by the state. You are bringing a major amendment, a new chapter that has been brought in, chapter 5B. Through this chapter, you want to give you two new measures. One is structural changes in the system. The another is a regulatory mechanism. Coming to the structural issues,
by inserting a new sections 49D, 49E, 49F, 49G. Two authorities are going to be constituted newly. Sir, the Act itself, there is a National Board for Wildlife, headed by Prime Minister, Vice Chairman is Honorable Minister. Similarly, you constitute the State Board. During the period of my tenure, we created the Wildlife Crime Control Bureau, where my leader, Mr. T.R. Balu, was the minister. He initiated the National Forest Policy. It was completed during my tenure. These two measures are very significant measures in the department to address all these issues, irrespective of this piece of class legislations. Sir, coming to the Act, when you are injecting a new provision in the name of new chapter, there will be a management authority. In addition to the National Board, in addition to the State Board, where the Chief Minister, where the Prime Minister, all are members, it is working properly. But you want to create a management authority once. Then under the management authority, who is the additional DG of the forest? Who will be head the authority? Then you are creating a new body, scientific authority. What is the role of scientific authority? The scientific authorities are private peoples, maybe NGOs or experts. I do agree with your intention. But this advisory body, authority, scientific authority, will advise the management authority. In turn, this management authority, everything working under the statutory body, namely the National Wildlife Board and State Board. Sir, when you are creating the new authorities, two authorities, since the forest is being maintained by the state, is it not your duty to bring the role of state government at least in the name of the district forest officer? No role at all. You want to satisfy the convention of the international trade. But where is your range officer? Where is your DFO? Where is your principal champion? Ignore ministry. So, some of the ministers may not be in line with your political color. But government is government. And now you are creating two segregations. Either schedule 1, 2, 3, 4. Now, animals are separate. Among the animals you divide into two. Then the grass, then the vegetables. I think that it is not in the line of religion. At least I am satisfied. There is no saffron color for this bill. But in spite of that, it has been divided. Please apprise me, what is the role of the National Management Authority and Scientific Authority? Sir, coming to the regulatory missions, I want to mention one more thing. When you are creating two bodies under this Act, in order to satisfy the international community, let me know, according to my source, after 2014, National Board for Wildlife, which was headed with the Prime Minister, where you are sitting as a Vice Chairman, has not been convened ever since from 1914. 2014 last meeting conducted. It has to be conducted every year. 2014, we are 2022. Almost 8 years, you did not bother about the wildlife at all. Suddenly you are bringing this Act saying that we want two more committees. The numerical strength of the committees will not give you any remedy when you are sitting without any action, inaction. So, what is the role of the state government? Then coming to the classification of the animals to protect them and penal provisions. Sir, now the regulatory measures. The existing Act says central government can issue notification declaring a species as vermin so long as that species is not listed in Schedule 1 or Part 2 of Schedule 2. Now you shifted to Schedule 2, it can be declared as vermin. A major decision is going to be taken by the government by virtue of this Act. So you are classifying, this is vermin, this is not vermin, by virtue of this classification. Whether this decision was taken after the due consultation of the state government? How can you say whether it is vermin or not? Unless and until the state government comments are being taken into consideration. Even the object and reasons, it is completely silent. It will be very dangerous. When you are declaring it as a species vermin without the consent of the state government, what will be the proliferation of one species or destroy of one species? This is very dangerous
provision, we have to reconsider. Sir, what type of coordination? Sir, next point is coming to the 62A, 62B. The central government may, by notification, regulate, prohibit, and import, trade, possession, or proliferation of invasive alien species. Invasive alien species which pose a threat to the wildlife or habitat in India. So you are having right to give direction. You are having right to regulate, prohibit, import, trade, possession, proliferation. With regard to what? Invasive alien species. Whether there is a clause with the domestic invasive species or alien invasive species, whether study has been conducted or not. Without a valid and scientific biological study, how omnipotent power can be conferred within the central government through this act without the state government? Against 62B, notwithstanding any provision in this act, central government may call for any information or report from the state government or any other such agency to issue direction to a state government. So, you are making the law yourselves without consulting the state, but thereafter, having enacted, you are going to receive the information with the state. What is this? Before tying the cattle, you have to do everything. Without cattle, you are doing everything and you want to bring the cattle. It will not work. So, what I am telling is, with the due respect to the government and Honorable Minister, your attempt is honest, but this attempt will not give any legitimacy, productivity. It is going to fail. That is why I am telling, the government really wanted to fulfill the commitment of the convention provisions. At least pay your attention to fill up these gaps when you are making the rules or delegate the powers to the states, how it can be coordinated with this act. Unless and until this was done, this act is going to be failed. Poor home exercise which was done by the ministry. I respect you. I respect your knowledge. In spite of that very poor exercise that has been done by the government, it cannot be accepted. Please revisit the bill. Thank you. Srimati Aprupa Podar. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak on Wildlife Protection Amendment Bill. I thank my party for giving me an opportunity, sir. Sir, the Act also schedules of plants and animals that are afforded various degrees of protection and monitoring by the government. Through this bill, this Act will be amended after 16 years. It's a welcoming process, sir. The most important reason given by the Environmental Ministry for introducing the bill, the urgent need to provide legislative backing to the commitments made by the India over past many years to the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, a multilateral treaty to protect endangered plants and animals that came into force in 1975. Now I would like to discuss on the provision of the bill. So the bill seeks to implement provisions of Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora. It provides the central government to designate a management authority which grants export or import permits for trade or specimens. It prohibits any person from modifying to or removing the identification mark of the specimen. Currently, the Act has 6 schedules for specially protected plants, specially protected animals and vermin species. The bill reduced to number of 4 schedules, sir. The bill empowers the central government to regulate or prohibit the import, trade, possession or proliferation of invasive alien species. The invasive alien species refers to plant or animal species which are not native to India and whose introduction may adversely impact wildlife or its habits. The central government may authorize an officer to seize and dispose the invasive species. Sir, through you, I would make a note to the Minister that our state of West Bengal has a densely forest of a neighboring country, Bangladesh border, and we have witnessed a rising case of smuggling of kangaroo
few days ago in Jalpaiguri forest. The forest department have seized it. Sir, the kangaroos are exotic species to India and they do not natively belong here. They struggle to adapt the new ecosystem and are mostly unsuccessful. They also carry the risk of disease that the native species might not have resistance. It's a very serious concern and alarming concern, and the border should be freezed, which the central government should take a note of it, sir. The Act entrusts the Chief Wildlife Warden to control, manage and maintain all the sanctuaries in the state. The Chief Wildlife Warden is appointed by the state government. The bill specifies that the action of the Chief Warden must be in accordance with the management plans for the sanctuary. For sanctuaries falling under species areas, the management plan must be prepared after consultation with the Gram Sabha concerned. Sir, West Bengal has 6 national parks and 16 wildlife sanctuaries. The latest notified wildlife sanctuaries of West Bengal is the Pakhi Bitan Wildlife Sanctuary is located in Jalpaiguri district of 14.09 square kilometer. Sir, we in West Bengal, our government has also been successfully done the sustained effort to build awareness led to drop ritualistic hunting by 95%, sir. The bill provides for any person to voluntarily surrender any captive animals or animal product to the Chief Wildlife Warden. No compensation will be paid to the person for surrendering such items. The surrendered items become the property of the state government. Sir, I would like to bring some observation and suggestion through you, sir, which to our Honourable Minister, and I hope he will answer my queries on this bill. The Parliamentary Committee recommended the deletion of the exemption clause for elephants and argued that a careful balance between tradition and conservation was needed. The bill empowers the government to have arbitrary power to declare species as vermin. The bill moots a reduction in the role of state wildlife boards, the bodies which are crucial in determining the fate to large projects involving forest or protects the area in the state. Finally, the bill loses the provision of transporting elephants, which is likely to encourage illegal trade in wild elephants. Sir, the bill fails to address the human-animal conflicts. There is a need to constitute Human-Animal Conflict Advisory Committee headed by the Chief Wildlife Warden to suggest the mitigation strategies such as changing crop pattern and drawing up site-specific plans. Sir, the Wildlife Protection Act 1972 specially prohibits trade in wildlife animals, including captive and wild elephants. Under Section 40 and 43 of the law, transfer, acquiring and receiving of the live captive elephant is permissible only with the prior approval of the Chief Wildlife Warden. However, such transfer, acquisition and receiving of the elephant should not involve any commercial transaction. And, sir, a new subsection of 4 to subsection 43 that takes away the protection from trade in them. The House panel report has recommended the deletion of the clause and provide an explanation to the provision for transport of captive elements. It is underlined that bill also has the provision of excessive delegation and unrestricted power of the central government. I repeat, excessive delegation and unrestricted power of the central government. अगर सब कुछ central government के हाथ में रहेगा तो फिर state government का क्या मतलब है? So I would request the minister to take a note of it, my suggestion, and which I have given, plus the environmental experts and the parliamentary standing committee have given. With these words, I conclude. Thank you, sir. Thank you. Members, kindly avoid talking loudly because it might disturb the people who are presenting their speech. Shri Gorantla Madhav. Thank you very much, Speaker sir, for giving me opportunity to address this House today.
and speak on such an important bill. Sir, it is our collective responsibility to protect the environment, which is essential for the very survival of flora and fauna. This environment has been passed on to us by hundreds and thousands of our earlier generations. And we have to pass on the same to the next generation. In this light, the bill intends to protect the wildlife and balance the ecosystem. Sir, the proposed bill seeks to amend the Wildlife Protection Act 1972 and is needed more now than ever with the environmental change world is undergoing. I commend the government for its insight in helping us move forward and protect our natural habitat and species in the best possible manner. With regards to sites, I would like to begin by stating that India has a rich natural heritage, both in species and fauna, that has been exploited in the past. The provisions within the bill to implement cites an international commitment to ensure that the trade of endangered species is fair and does not harm them is a such needed step to preserve our heritage. The bill lays out a detailed methodology as to how to implement cites, and this will ensure that the implementation is smooth and effective without unnecessary hurdles and middlemen. Second point, sir, with regard to management committee, the creation of management committee is to ensure that registration certificates are provided to those dealing with endangered specimens is an important mechanism to prevent harmful elements from abusing our natural wealth. Such a step will ensure that whoever deals with a scheduled specimen report that details of the same to the government. Sir, the third point with regard to the appointment of the Chief Wildlife Warden. The appointment of the Chief Wildlife Warden will help preserve our sanctuaries better. The warden will serve as the voice of authority and make a single office responsible for efficient conservation, allowing the disposal of outdated administrative obstacles. Sir, additionally, allowing the appointment to be decided by states is an important step that respects the principles of the federalism this country was built on. Sir, with that being said, I have a few reservations about the bill that I would like to bring to your notice. The first point, sir, is with regard to the invasive alien species. The bill introduces the concept of invasive alien species, which is commendable. But the definition of, as per the bill, of species, which is not native to India, is not the correct scientific definition. Sir, however, the bona fide use of this water should be recorded within the management plan of the sanctuary, as it is also used by wild animals and forms a habitat for fish. To ensure that the environmental ecosystem works in harmony, the record of the bona fide rights should be a legal necessity. Sir, traditionally, the declaration of a wild animal as vermin has been done without any scientific assessment or study, and in the case of the bill, it would now mean that species such as striped hyena, Indian fox, Bengal fox, etc. Sir, this would have
for far-reaching consequences for the environmental ecosystem, sir. Sir, I request the government to consider both suggestions, sir. Sir, having laid out these points, sir, I come to the conclusion of the bill. The overall sentiment and direction of the bill is something that no well-wisher of Indian can deny. I hope that the center is able to bring greater clarity on the points, sir, I mentioned, so that we may have a strong legal framework for protection of our wildlife, sir. Thank you, sir. श्री राहुल शिवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करता हूं। 50 साल पहले वजूद में आए वन्य जीवन संरक्षण कानून 1972 में अब तक कई बार संशोधन हुए। यह 8वां संशोधन इस कानून में प्रस्तावित है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora CITES का एक पक्षकार होने के नाते इसके बेहतर क्रियान्वयन करने का सरकार का उद्देश्य है। यह विधेयक वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। एक सराहनीय बात है। उल्लेखनीय है कि 1972 के मूल कानून में जहां सामान्य अपराध उल्लंघन के लिए जहां जुर्माने को रकम 25,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। विशेष रूप से संरक्षित वन्य जीवों के खिलाफ हुए अपराध या उल्लंघन के लिए पहले जहां जुर्माने की रकम 10,000 रुपए थी, उसे अब 25,000 तक कर दिया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इस तकनीकी के जमाने में इंटरनेट ऐसे व्यापार को आसान बना रहा है। इन नए माध्यमों के इस्तेमाल मसलन इंटरनेट को साइबर अपराधियों की श्रेणी में रखते हुए इस अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए। साइबर क्राइम को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की 2019-2020 की रिपोर्ट में भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में भी बतलाया गया है कि भारत में ये सब तेजी से बढ़ रहा है और उसे कंट्रोल करना चाहिए। अध्यक्ष जी, दूसरा उद्देश्य इस कानून के तहत संरक्षित वन्य जीवों, पक्षियों और पक्षियों के लिए निर्धारित अनुसूचियों को सरल बनाने का है। इसलिए इस संशोधन का मुख्य जोर इन अनुसूचियों को बदलने पर है। मूल कानून में और 2013 में हुए संशोधन में अब तक अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 1 में दी गई प्रजातियों और अनुसूचित 1, 2, 3 और 4 में शामिल प्रजातियों के लिए संरक्षण और उनके हनन के लिए अलग अलग दंड विधान मौजूद थे, जिन्हें अब केवल 2 अनुसूचियों में तब्दील किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय है। अध्यक्ष जी, अनुसूचियों में प्रस्तावित बदलाव को स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की भी जरूरत है। अध्यक्ष जी, हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर्स को ठीक वही कानूनी पवित्रता या श्रेष्ठता प्राप्त नहीं है जैसे टाइगर रिजर्व को है। हाथी के पर्यावसों के लिए कभी कुछ किया ही नहीं गया है। हाथी मानव द्वंद भी उन्हीं इलाकों में बढ़ रहा है जहां उनके नैसर्गिक रास्तों में खदानें खोद दी गई है या उनके नैसर्गिक पर्यावस के साथ गंभीर छेड़छाड़ हुई है। अध्यक्ष महोदय, हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर्स को ठीक वही कानून पवित्रता को श्रेष्ठता देने की जरूरत है जैसे टाइगर रिजर्व को है। इसके लिए सरकार को इस संशोधन में प्रावधान करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, वन्य जीवन संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों को बीच हमेशा गहरा तनाव रहा है। वनाधिकार मान्यता कानून 2006 को चुनौती देने वालों में वन्य संरक्षणवादी समूह ने अहम भूमिका निभाई थी। वो आज भी वनाधिकार के तहत मान्य किया जा रहा है अधिकारों को वन्य जीवों और जंगल के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। इस संशोधन में वनाधिकार मान्यता कानून 2006 की अहमियत को स्वीकार करते हुए अभयारण्य क्षेत्रों में केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार प्रबंधन योजना बनाते समय वन अधिकार मान्यता कानून का सम्मान करते हुए संबंधित ग्राम सभा से परामर्श लिया जाना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि यह प्रावधान 2013 में हुए संशोधन में भी शामिल था, लेकिन इसका असर दिखलाई नहीं दिया। इस प्रावधान का स्वागत किया जाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 4 राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य की सीमा में निवासरत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत समुदायों के अधिकारों को मान्यता देते हुए धारा 4(2) जी इसके तथ्य को स्थापित करता है कि मानव समुदायों व पर्यावरण के बीच सह अस्तित्व जैसे युक्तियुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में निवासरत समुदायों के पुनर्वासन व पुनर्स्थापना के लिए प्रावधान किए गए। धारा 4(3) में भी गए प्रावधान में भी यह भी स्पष्ट किया गया कि यह अधिकार केवल इस शर्त पर दिए जाएंगे कि ऐसी जनजाति या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन्य निवासियों ने 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन भूमि अधियोग में ली है। यह इस कानून का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो इस गलतफहमी को भी दूर करता है कि जिसके तहत यह प्रचारित किया जाता है कि गैर जनजाति लेकिन परंपरागत समुदाय को 3 पीढ़ी या 75 ईयर्स से वन भूमि पर काबिज होने का प्रमाण देना होगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक स्वागत योग्य कदम है। अध्यक्ष महोदय, इस स्वागत योग्य और सहनीय पहल के साथ साथ इस संशोधित अधिनियम में भूमि अधिग्रहण के लिए औपनिवेशिक कानून 1984 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 को भी बदला गया है। अध्यक्ष महोदय, अगर एक साथ वन अधिकार मान्यता कानून 2006 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार कानून 2013 को अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क क्षेत्रों में लागू किया जाता है, तब सही मायने में यह परंपरागत रूप में जंगलों में निवासित आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदायों के हित में होगा। इसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। अब तक इन क्षेत्रों में से बसे समुदाय को केवल पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का पात्र ही माना गया है और इसके लिए भी उन्हें एक मुश्त नकद पैकेज के रूप में दिया जा रहा था। उन्हें उचित प्रतिकर से वंचित रखा गया था, लेकिन इस कानून को वन्य जीवन संरक्षण कानून में स्थान दिए जाने के बाद इन समुदायों को भी अब इस दायरे में लाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नकद पैकेज की व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए और 2013 में पारित हुए कानून के मुताबिक उचित प्रतिकर का आंकलन करके स्पष्ट व्यवस्था व दिशा निर्देश बनाया जाने चाहिए। कानून के तहत गठित राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड के तर्ज और राज्य वन्य जीवन बोर्ड की संरचना में आमूलाचल बदलाव इस अधिनियम के मसौदे में सुझाए गए। अब तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, इसमें इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन आज संशोधन के जरिए अब मुख्यमंत्री को इस भूमिका से बाहर कर दिया गया। अब इस व्यवस्था में वन मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाया दिया गया और इसके साथ ही सदस्यों की संख्या 10 सदस्यों के तक सीमित कर दी है। मैं माननीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के वन मंत्री का जो स्वागत करता हूं, लेकिन जो सदस्य संख्या 10 है वो संख्या कम न करते हुए ज्यादा उस संख्या उसमें करनी चाहिए और बोर्ड की जल्दी सब बैठक जल्द होनी चाहिए और बोर्ड का जो रिस्पांस है और इसके बारे में डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और इस महत्वपूर्ण विधेयक का मैं फिर एक बार समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री सुनील कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, वन्य जीव शब्द का व्यापक रूप से उपयोग अपने प्राकृतिक पर्यावास में पाए जाने वाले किसी वन्य पशु, पक्षी, जलीय या स्थलीय वनस्पति के लिए किया जाता है। महोदय, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। इसे सन 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। अन्य सुधारों के अलावे अधिनियम संरक्षित पौधे और पशु प्रजातियों के अनुसूचियों की स्थापना तथा इन प्रजातियों की कटाई और शिकार को मोटे तौर पर गैर कानूनी करता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। महोदय, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 की बात करें तो प्रश्न उठता है कि किसकी सुरक्षा, किसका संरक्षण और किसका प्रबंधन। महोदय, 50 साल पहले वजूद में आए वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में अब तक का 8वां संशोधन इस कानून में प्रस्तावित है।
इससे पहले 1982, 86, 91, 93, 2002, 6, 13 और 21 में संशोधन हो चुके हैं और अब इसमें पुनः संशोधन की आवश्यकता आन पड़ी है। मूल रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाना और प्रजातियों के लिए नई अनुसूचियों को तैयार करना मुख्य मकसद है, क्योंकि सन 1920 में डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई थी। यह विधेयक कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों को संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। विधेयक को मुख्य विशेषताओं में एक साइट्स सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि वन्य प्राणियों और पौधों में नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों का अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा। कन्वेंशन के तहत सभी देशों में यह अपेक्षित है कि वे परमिट के जारी सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को रेगुलेट करेंगे। नमूने के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने के लिए केंद्र और प्रबंधन प्राधिकरण को नमूनों के अस्तित्व पर व्यापार प्रभाव पर सलाह देने के लिए एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नामित कर सकता है। बिल किसी भी व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नमूनों के पहचान चिन्ह को संशोधित करने या हटाने से रोकता है। अनुसूचित जानवरों के जीवित नमूने रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। केंद्र एक मुख्य वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति करेगा जो कैद में प्रजनन के लिए आवेदनों को संसाधित करता है या किसी अनुसूचित नमूनों को कृत्रिम रूप से प्रचारित करता है। उल्लंघन के मामले में आवेदक के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार उसे है। माननीय सभापति महोदय, बड़े सौभाग्य से मैं वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक में चर्चा में भाग ले रहा हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर अंतर्गत वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य है। बिहार राज्य का इकलौता व्याघ्र अभ्यारण्य 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। यह बिहार के कुल वन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य में स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, लताएं और पौधे के प्रकार हैं। बदलते मौसम और जलवायु के परिवर्तन को ध्यान में रखकर जानवरों को उनके अनुरूप ढालने के लिए भी उपाय होने चाहिए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन होने पर भी वे खुद को परिवर्तन के दौर से जी सके। जानवरों को दो विशेष रूप से संरक्षित अनुसूचियों में वर्गीकृत किए हुए बिल पर कुछ अपवादों को छोड़कर किसी के द्वारा भी उनके व्यापार को प्रतिबंधित करता है। बिल बर्मिन प्रजातियों के लिए वर्तमान शेड्यूल, नमूनों के लिए एक नया शेड्यूल सम्मिलित करता है। बिल में अनुसूचित 1 के तहत 131 स्तनधारी, 112 पक्षी, 43 सरीसृप, 26 मछलियों, 63 कीड़े, 338 मूंगे और अनुसूचित 2 के तहत 41 स्तनधारी, 864 पक्षी, 12 सरीसृप, 58 कीड़े मोलस्क को भी सूचीबद्ध किया गया है। पौधे के लिए एक अलग प्रकार के भी सूचीबद्ध है। विधेयक केंद्र को भारत के मूल निवासी नहीं आक्रामक विदेशी प्रजातियों का आयात, व्यापार, कब्जे या प्रसार को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। राज्य के अलावा केंद्र में भी संरक्षण रिजर्व को अनुसूचित कर सकता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से सटे क्षेत्र में महोदय, ध्यान देने वाली बात यह है कि सुरक्षित वन्य जीवों द्वारा अभ्यारण्यों से सटे इलाके में मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा की सख्त जरूरत है। मेरे लोकसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर में आए दिन वन्य जीवों, खासकर बाघ, तेंदुओं द्वारा क्षेत्रवासियों पर हमला किया जाता है और इस हमले में कुछ लोगों की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे कार्यों में को ध्यान में रखकर संशोधन करने की जरूरत है। बाढ़ के दिनों में वन्य जीव नदी और जल के स्रोतों के रास्ते रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और लोगों द्वारा सरकार को सूचना देकर उन्हें सौंप दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षा से किसी भी बंदी जानवरों या पशु उत्पादों को मुख्य वन्य जीव वार्डन को सौंप सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्ति को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जाता है और कुछ प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए जिससे लोग प्रेरित होकर वन्य जीवों को सौंप सके। जबकि आत्मसमर्पण की गई वस्तुएं राज्य सरकार की संपत्ति बन जाती है। बिल के तहत सामान्य उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान उचित है। महोदय, वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य में बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। यह देश और राज्य के लिए खुशी की बात है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ वन की कमी भी है, परंतु राज्य सरकार वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभ्यारण्य के अतिरिक्त जो है बिहार
के नालंदा जिले के अंतर्गत राजगीर में व्याघ्र एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु विकास किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन परियोजनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभयारण्य एवं राजगीर के विकास और संवर्धन के लिए भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में भी रखना चाहिए और मैं अंत में इस विधेयक का अपने पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। It was Shri Sunil Kumar's maiden speech. So, all the best for him. Honorable Minister Rajkumar Ranjan Singh ji. Very Honorable Chairman, I will speak in Manipuri. Ngasi puthoiba Wildlife Protection Amendment Bill 2021 ase matam siga yam chunaba speedy protection and conservation of rare species ida mateng panggadaba adugumba bill nen lojai matang sida ina yam longai jabadi Manipuri amoina pony ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ more than 3,000 years of civilization ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯪꯒꯟꯗ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ civilization create ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ the famous world polo se sidagi genesis tꯧꯈꯤꯕꯅꯤ adubu laibak thibade changing circumstances sing asina aikhoigi hanagi habitat area maruina water bodies aduga marshy land grassland lerambasing adu human population hangalakpadagi the so called civilization gi movement se lakpadagi magi habitat area se extremely reduced tawkre maram aduna hojik matamamagi manipur gi civilization amasung culture aduga heritage mayamama protect tawdana modern world sida bharat ki apunba sanskriti da aikoina present tawjariba share tawjariba mayam ase sagon sigi mapandagini adubu hojikti hairiba sagon se limited space and changing circumstances ina below 500 population ki makhada lagre. This is the unique species of Manipur pony aduna asigi XC amendment XC laka bill si pass to matungda we have enough scope and I feel that the pony will be certainly protected and promoted and the population will be increased. So thank you very much for such introduction of amendment bill by the honorable the minister and as well as I thank to the Prime Minister of India for this amendment. Thank you. Srimati Sharmista Sethi ji. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity to speak on this important bill that seeks to protect wild animals, birds, and plants to ensure ecological and environmental security of the country. Sir, on behalf of my party, that is Biju Janata Dal, I rise to support this bill. Sir, as we all know that India is the home to 16% of world population. At the same time, different species of mammals, birds, reptiles, amphibians, fishes, invertebrates, and other 50,000 plant species also call this subcontinent home. Encroachment on this wildlife habitat have posed a serious threat to the very wildlife, especially to the endemic species such as Asiatic lion, Bengal tiger, India white-rumped vulture, Nilgiri leaf monkey, etc. 172 wildlife and endemic species of India are also included in the International Union for Conservation of Nature, designated threatened species of the world, which accounts for 2.9% of the world, which accounts for 2.9% of the number of the threatened species of the world. At present, we have Wildlife Protection Bill, Custom Act, import-export policies in India. But still, illegal hunting, poaching activities, and trade is flourishing. Further, Wildlife Protection Act does not cover the foreign endangered species of plants and animals. The concussion of the inadequate legislative protection and uninformed
Enforcement officials often result in endangered species and indigenous wildlife being passed off as foreign species which are not regulated by any formal legislation. Further, some of the migratory species are not protected by the Wildlife Protection Act. Similarly, conservation of fishes has never been adequately addressed in India due to lack of scientific data and preparation about perception about the criteria to be used for characterization and designating conservation status of certain fishes. For an effective approach to combat the illegal trade in wildlife, the legislation for protection of wildlife need joint enforcement and transnational congruency for uniform implementation. Our state government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has taken several steps for protection of forests and wildlife. The state has 19 wildlife sanctuaries, national park, elephant and tiger reserves, identified corridors for addressing conservation of wildlife of state in natural environment of animals. 11 zoos have been established in the state. 15 eco-sensitive zones around the protected area have been proposed for declaration as per the direction of Government of India. All sanctuaries are guided by a wildlife management plan prepared for the 10 years. Similarly, all zoos are operated as per the zoo management plan approved by Central Zoo Authority. As of now, 539 members of eco-development committees have been formed, covering an area of 43455.32 hectare of protected area. In order to protect elephants and to ensure minimal human-elephant conflict, 25 hectares of rejuvenation of corridor has been taken up during 2021-22. Vulnerable national and state highways are being identified to take steps to check roads accident of animals. 586 numbers of anti-depredation and anti-poaching squads, elephant squads, and 115 elephant trackers have been engaged to prevent depredation of wild animals. Government have launched awareness programs with the help of BSS and eco-development committee members, NGOs, school students. Further, 2785 numbers of Gaja Sathi have been engaged in 557 numbers of villages. Nandankanan Zoological Park received Pollution Control Appreciation Award. Apart from that, the persons having exemplary contribution in the field of wildlife conservation are felicitated with the Biju Patnaik Award with Wildlife Conservation, which has been instituted since 2005. Sir, as this so, we can safeguard them, protect them with strong legislation and implementation mechanism. This bill has been examined by Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change. The committee, while examining the bill, have made certain important recommendations, and I think these recommendations deserve consideration. The committee believes that the infrastructure needs to be mobilized more meaningfully in the cause of wildlife conservation, protection and management. The committee recommends that following insertion in Section 33 of Principal Act for the words manage and maintain all sanctuaries, the words manage and protect all sanctuaries shall be substituted. I think this is a good suggestion. After all, our intent is to protect them. Sir, in clause 2, the committee recommends that after the word protection, the word research may be inserted, and after the words management of wildlife, the words enabled by science may be inserted. I think there should be a distinction between a criminal act and possible erroneous breach of law, especially regarding permission granted for education, science and research. The latter should attract fines undoubtedly, but not imprisonment. The clause 6A2, the committee recommends that for the words not more than 10 members to be nominated by the vice chairperson, from amongst the members of the board, the word 15 words, at least 1/3 of the non-official members of the state board to be nominated by vice chairperson, at least 3 institutional members of the state board to be nominated by the vice chairperson and director of Wildlife Institute of India, or his or her nominee may be substituted. If implemented, this will make the board more professional with domain experts. The committee also noted that several species were missing in all 3 schedules and that the bill fails to address human
animal conflict. To remedy this, the committee has recommended that a human-animal conflict advisory committee headed by Chief Wildlife Warden to suggest the mitigation strategies such as changing cropping patterns and drawing up site-specific plans. I am hopeful that the House will deliberate in detail all these suggestions and will draft a robust legislation. The need for effective strategies and solutions for the protection of wildlife in India and conservation of wildlife is the need of the hour. The government must work in accordance to the present needs and demand in situations when these wildlife species are threatened and many of which have come to verge of extinction. The state government and central government is required to work together and implement all the relevant laws and conservation strategies in order to protect the wildlife and prevent illegal hunting and trade of these endangered species and wildlife as a whole. Thank you, sir. श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। सभापति महोदय, आपने हमें वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आपका और मेरी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार प्रकट करता हूं। महोदय, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सुधार हेतु इससे पहले 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006 और 2013 में अब तक 7 बार संशोधन हो चुके हैं। मौजूदा अधिनियम वन जीवों एवं वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध व्यापार और शिकार पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में किए जा रहे संशोधन स्पष्ट और पारदर्शी नहीं हैं, न ही अनुसूचियों में शामिल की जा रही प्रजातियों को लेकर कोई स्पष्टता है। विशेष रूप से अनुसूची 4 जो CITES को आधार बनाकर जोड़ी गई है, उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं है। प्रस्तावित कानून में वन्यजीव पक्षियों और पादपों के संरक्षण की मूल भावना में परिवर्तन कर केवल वन्यजीव में सीमित कर दिया गया है, जो इस प्रावधान को और अधिक कमजोर बनाता है। प्रस्तावित कानून के तहत जीवित हाथियों को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब हाथियों के ट्रांसपोर्ट, व्यापार या खरीद फरोख्त किया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक की मंशा हाथियों से ऐसे जंगलों को मुक्त कराना भी है जहां अकूत खनिज और कोयला दवा है, जिससे इसका दोहन आसानी से किया जा सके। साथ ही इसमें राज्य वन बोर्ड को भी कमजोर करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून के तहत राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और वन मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसके सदस्यों में अधिकारियों के साथ साथ 10 पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होते हैं। लेकिन इस कानून में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 6A का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड की एक अस्थायी समिति का गठन करने का प्रस्ताव है। इसकी अगुवाई वन मंत्री करेंगे। समिति के सदस्यों की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होगी, जिनके नाम मंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। अगर मंत्री चाहेंगे तो अस्थायी समिति के सिर्फ 2 सदस्यों, वन मंत्री और 1 सदस्य के साथ भी काम कर सकते हैं। इससे राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की कोई बैठक साल 2014 से नहीं हुई है। इसके उपाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस प्रस्तावित कानून के जरिए लकड़बग्घा, अंडमान, जंगली सुअर, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, सियार जैसे जानवरों को बर्मिन जीव जंतु की श्रेणी जो फसल या अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं में डालने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य को डायरेक्ट रूप से हानि पहुंचाता है और यह फसल भी बर्बाद नहीं करते हैं। इस संशोधन द्वारा इनकी आसानी से हत्या की जा सकेगी और
इनके चमड़े का गैर कानूनी व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। सरकार को इस पर विस्तृत विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों का अवैध व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पैमाने पर हो रहा है। तकनीकी के जमाने में इंटरनेट ऐसे व्यापार को और अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे प्रजातियों को लेकर डायरेक्ट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2019-20 की रिपोर्ट में भी इस बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता जताई गई है। ऐसे में सरकार को इस साइबर अपराधों की श्रेणी में रखते हुए इस अधिनियम में प्रावधान करना चाहिए। वही विशेष रूप से संरक्षित वन्यजीवों के खिलाफ हुए अपराध या उल्लंघन के लिए जुर्माने की रकम वर्तमान में 25,000 रुपये है। इसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए और दंड के प्रावधान को और अधिक कठोर बनाया जाए। यौन हाथी रिजर्व या हाथी कॉरिडोर को ठीक वही कानूनी श्रेष्ठता प्राप्त हो जैसे टाइगर रिजर्व को है। साथ ही वन्यजीव के पुनर्वास के प्रबंधन पर जोर देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, साथ साथ माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि वन क्षेत्र के अंदर जो गांव बसे हैं उन गांवों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और जनपद स्तर पर अधिकारियों के द्वारा रास्ते को बनने से भी रोक दिया जाता है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि कानून बनाकर रास्ते को बनाने के लिए निर्देश दिया जाए। साथ साथ मेरे क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर में 2 जनपद आते हैं और जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है, अक्सर जंगली जानवर चीता और जंगली जानवर तमाम मनुष्य के बच्चों को, जानवरों को इस तरीके से जंगल में उठा ले जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्रावस्ती और बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जनपद है। माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना है कि उसके किनारे उनसे बचने के लिए कम से कम विशेष रूप से व्यवस्था करें। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैसल जी। Thank you very much, Chairman Sir, for allowing me to participate in the Wildlife Protection Amendment Bill 2021, and I'm thankful to my party for posing faith on me. The bill seeks to increase the species to be protected. I appreciate the kind of effort the Honourable Minister and the team have carried out to bring in a draft amendment by way of the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. And I'm in support of the bill, but at the same time, I wish to get few clarification from the Honourable Minister on certain issues. The first one is the whole ambit of the bill. What I feel that the emphasis is more given on the management of the resources rather than the protection. Why I said wildlife management takes into consideration the ecological principles as such as carrying capacity of the habitat, preservation and control of the habitat, reforestation, predator control, reintroduction of extinct species, capture and reallocation of abundant species, and management of desirable or undesirable species. Protection of wildlife and management of resources should be addressed with the same importance, and a shift from the protection aspect to the management of resources may weaken the protection strategies of scheduled fauna and flora. Further, sir, the proposed amendment must include a section to mandate the central and state government to protect and conserve areas outside the protection areas, which are known as recognized as wildlife habitats. The bill also misses an opportunity to recognize the protect corridors of the important migratory routes and flyways. Most of the proposed amendments lack the careful consideration, scientific rigor and transparency that the exercise demands. The preamble itself is problematic. Whereas earlier the emphasis was on the protection of wild animals, birds and plants, the amendment introduced the term management. While seeming innocuous, this implies a shift in the mindset of the government from the protection of wildlife to its management as a resource. So my second point is the vermin species. On this, the criteria need to be adopted, sir.
In the present Act, the central government can declare any wildlife animal, which is not in Schedule 1 and 2 of the Schedule 2, as vermin under Section 62. The proposed amendment has reduced the list of wild animals appended to the Act from 4 schedules to 2 schedules. In doing so, the bill now proposes that any wild animal not listed in the Schedule 1 can be declared as vermin, which means that all animals listed in Schedule 2 can't be declared as vermin. The list includes 41 mammals, 864 birds, 12 reptiles, 5 amphibians, 58 insects, 14 molluscs, and 10 sponges, which may be declared as vermin by the central government. While most of the animals which can be declared as vermin in the present Act and the proposed bill may not have significant differences in the composition of the species covered. And the other part is the central government must deliberate the justification on listing the vermin animals. Because while the purpose of declaration of any animal as vermin has been to control the population of animal which is beyond management. Such an exercise must be undertaken with utmost caution and respecting the constitutional duty, Article 48A, of the government to protect the forest and the wildlife. So the third point is that, as far as coming to the elephant trade, the bill allows that. But here we need a clarification there, and the newly inserted Section 43(4) states that, with an inverted, the section shall not apply to transfer or transport of any live elephant by a person having a certificate of ownership, where such persons have obtained prior permission from the state government on fulfillment of such conditions as may be prescribed by the central government. Here, the section is unclear as to meaning of the prior permission from where. The state government, and from which state government? The government which is from where the origin of the transport is happening, or to the state which is going. So we need to have a clarification on such permission from where to where the animal is being transported. And such transport, I must say that such transport must be made, in the notice of the chief life wardens or the authorized officials. It is necessary for the interest of the elephant protection that any transfer or interstate transport to be notified to the chief wildlife or authorized official of the jurisdiction where the elephant has been transferred or transported from the jurisdiction to which the elephant has been transferred or transported. Such record should also be maintained by the concerned authority. So coming back to the centralization, this is the most important part which we are already discussing. On that part, the bill rendered the existing state boards for wildlife as a defunct one. The bill weakens premier institutions like the State Board for Wildlife, headed by the Chief Minister, for all their emphasis on clearing projects with the protected areas. Some state boards like Karnataka and Maharashtra have been proactive in expanding the protected area networks. It is now proposed to establish a standing committee of the SBWL to be headed by the Forest Minister, effectively rendering the SBWL defunct. This was the case with the National Board also, sir. Sir, to be headed by the National Board. Please conclude. Yeah, I'm concluding. It dilutes the gravities of the BSB, reducing the body to me. Yes, sir. I have some. Thank you, sir. Reducing the ambit of the gravitas of the BSBD, reducing to be a body meeting with the sole purpose of allowing damaging products with the PAs. Sir, one more issue is that they are trying to include the Niti Aayog into the standing committee. Most of the Niti Aayog projects are contrary to the conservation part, sir. So this all aspect to be taken into consideration, and I need a clarification from the other side. Sir, final point. Increasing the ambit of legislation by using the term wildlife, which includes any animal, aquatic or land vegetation that forms a part of the habitat. As far as my constituency, because I'm concluding, sir, give me just 1 or 2 minutes, sir. As far as Lakshadweep is concerned, I urge that more detailed discussion should be there by expert in the listing of individual species instead of groups, sir. Listing of individual species instead of group is a major deviation from the current act, and it will need further consideration. This can give rise to taxonomic ambiguity when identifying species and filing wildlife offences in many cases.
Additionally, many species from these groups have not been included in the current schedule. Also, new species are still getting described, which is especially true for invertebrates, corals, sponges, and amphibians. And these newly reported won't get due protection as per the legislation we are going for listing individuals instead of group. Sir, as far as Lakshadweep is concerned, its marine life is not completely known till. Research works are going on to list undiscovered aquatic flora and fauna, which may contribute much more for the biodiversity concern. If individuals are listed instead of groups, sir, these individuals which should be protected for conservation of the ecological balance of islands can be included in the schedule, which may lead to large scale of destruction, which is going to happen by constructing the lagoon villa, sir. Though their name changed the water villa, the lagoon villa which is proposed to come in Lakshadweep is in the lagoon area. The lagoon area is the only area for the preservation and conservation of corals, which is the life of islands, sir. When the coral is destroyed, then the existence of island is on stake. And the administration is saying that the permission has got from the environment ministry. I'm very doubtful. I would like to get a note on that, sir, whether it is clear or not. And the final part, sir, see the sea cucumber. Sea cucumber is, is falling under the Schedule 1, which is protected under. But the problem is the awareness which is not given to the people there. The cost of 1 kilogram of sea cucumber. Sir, I'm just concluding, sir. Over. Just concluding. This is the most important part, sir. Sir, 1 kilogram of sea cucumber values nearly 5,000 to 12,000 rupees per kilograms. Now, recently, sir, to protect the sea cucumber, the same ministry, sir, you sanctioned a special scheme appointing marine watchers in the anti-poaching camps. Due to that, we could seizure the smuggling of these seafood smugglers, and there has been a CBI case on that, sir. But what happened after the new administrator came in, sir? Entire marine watchers, they have been retrenched from the job, and smuggling is going on, sir. I have highlighted the point. I have given a DO letter to you, sir. So this is concerned with the ministry's scheme, centrally sponsored scheme implementing the island. I don't know what is the problem with the administration to implement it. So kindly, sir, I am concluding it, sir. On this aspect, clarification is required from your side. With all this, I support the bill. Thank you so much, sir. Thank you, sir. I'm thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important bill. In this year of Azadi Ka Amrit Mahotsav, where we are celebrating our human accomplishments, I feel the time has come not only to celebrate but also to resolve today that we will leave no stone unturned to protect, preserve, and enhance our natural heritage in this Amrit Kal. I am sure the Environment Ministry is doing something on this and would be happy. One second. And would be happy if the Honourable Minister shares with this House what his ministry is doing to protect, preserve and enhance our natural heritage, biodiversity, and what plans it has for these in this Amrit Kal. Sir, the House should feel proud, rather the entire country should feel proud, that in spite of India having just 2.4% of the world's landmass, we are contributing more than 8% the world's biodiversity. India has more than 90,000 varieties of fauna, 45,500 of flora, and home to 4 out of 35 world biodiversity hotspots. But at the same time, if we don't act or become blind to what is happening during the last 20 to 25 years, our advantage in our conservation story would become a sad story indeed. I'm saying this because we are one of the top 20 countries in wildlife trafficking as well. We have seen nearly 25 species of fauna and flora become extinct, and more than 100 species are currently endangered. With these preliminary submissions, since time at my disposal is very limited, I wish to directly come to the bill and share my views with the hope that the Honourable Minister would peruse them and take remedial measures. First, I come to Clause 3 of the bill, which talks about invasive alien species, whose introduction or spread may threaten or adversely impact wildlife or its habitat in our country. I welcome this. Here I wish to bring to the notice of the Honourable Minister one study which indicates that India is losing nearly $100 billion every year due to invasive species, sir. I will give one example from my home state of Andhra Pradesh.
how introduction of an exotic plant species in the 1980s in Seshachalam Hills, home of Lord Balaji, is now taking its toll. The plant species from Australia, Indonesia, and Papua New Guinea was introduced in our Seshachalam Hills was Acacia auriculiformis, commonly known as Ori, earleaf acacia, or earpod wattle. It has disturbed ecological balance in Chittoor, Kadapa, and Nellore districts of Andhra Pradesh. Now we have to replace it with native species. Otherwise, the entire biosphere of Seshachalam, which is home to several endemic plants like red sanders, cycas, etc., would be destroyed. So Clause 3, which deals with it, is a good move, sir. But at the same time, this clause is silent on native Indian species which have invasive qualities. Hence, I suggest for constituting a task force to study this and to recommend to the Ministry for taking appropriate action. Secondly, if you look at Appendix 2 of Schedule 4, item number 444, you have mentioned Pterocarpus santalinus. It is a scientific name for red sander tree, which is available only in the Seshachalam forest in Chittoor of Andhra Pradesh. It is smuggled out of the country by local smugglers. You might have seen, if you saw the movie Pushpa recently, it depicted these type of scenes, sir. Sir, it is smuggled out of the country, and any action for smuggling of red sanders is under the Customs Act and not under the Wildlife Protection Act. It is because this tree is not a scheduled species, sir. So I suggest for consideration of the Honourable Minister to include red sanders under relevant schedule, which helps to take action under this legislation. Thereby we can reduce smuggling and save red sanders from extinction. The next point I wish to make is about transfer of live elephants under Clause 27. Many honourable members have spoken about it. I am with the government when elephants are sold or given for performing some rituals at temples. But all I wish to say is that care should be taken against the unscientific management and apathetic treatment of elephants by administration, mahouts, and others. I am worried because 29 captive elephants died in 2021, and in 6 months of this year, 3 elephants have died in captivity. I suggest that the government should issue strict guidelines and also create some inspection mechanism for regular checks and taking punitive action for any violation of those guidelines. Now I come to Clause 62 of the bill, which empowers the Government of India to declare any animal as vermin, as the Honourable just mentioned a while ago. Sir, we call vermin as nuisance animals, as they destroy our crops, kill livestock, and spread diseases. It does not mean that we kill them left and right. Nothing has been mentioned in the clause on the process to be followed to identify which animals are vermin. No transparent and accountable process based on ecological and social evidence has been prescribed. Sir, the moment a wild animal is declared as vermin, it loses its legal protection, and such animals become a domestic animal and can be killed, tamed, or traded. I feel it will have ecological consequences which will lead to imbalance, sir. Secondly, even the Supreme Court in Animal Wildlife Board versus India versus A. Nagaraja case in 2014 categorically held that every species has the right to life and security with some intrinsic worth, honor, and dignity. So all I wish to submit to the Honourable Minister is to have a scientific approach and transparency in declaring wild animals under Schedule 2 as vermin. The bill proposes to increase penalties for general violations from 25,000 to 1 lakh and violation against specially protected animals from 10,000 to 25,000. I feel that these are still very much on the lower side, sir, and the Honourable Minister can consider revising it multiple times, looking at the importance of ecology and protecting nature and wildlife. Sir, the next point is the one on which this entire bill is placed, and it is the Convention on International Trade in Endangered Species. We joined this convention in 1976, sir, 46 years ago, and this convention mandates parties to take suitable steps to enforce its provisions. And we are implementing this in 2022. What are the reasons behind this enormous delay may kindly be explained to the House. Sir, these are some of the points I wish to bring to the notice of the Honourable Minister. Please conclude. Hope that he would act on them accordingly. Let us give a simple message to the country, sir. Let every citizen of this country love and conserve our amazing wildlife and biodiversity. Thank you very much, sir. Thank you. Shri Dean Kuriakos.
Thank you, sir. Sir, the bill seeks to implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, that is CITES. Sir, it is a protection for wild animals, birds and plants. Sir, the main amendments have been taken place in the area of schedules. Earlier in 1972 Act, there were 6 schedules, and now it's reducing to 4 schedules. As per the new amendment, Schedule 1 specifies the animals whichever needed the stronger protection, and the Schedule 2, that means the animals whichever needed lesser protection, and Schedule 3, it's handling about the plant species, and Schedule 4 specified it's for the species from the convention. So the Schedule 5 is going to delete from the from after passing this amendment. Sir, the entire content of this act and the new amendments, whoever violating the Wildlife Protection Act, he must be punished, no doubt about that. But my concern is about the human-animal conflict, sir. We have to protect the wildlife, but we have to protect the people who are living outside the forest also. That's my concern. I'm coming from the area that is more than 350 kilometers of boundary with forest. Day to day, we are facing the issues. That means, as per the Kerala government statistics, 1,233 people have died the last 10 years by animal attacks. More than 34,875 times wild animals attacks have taken place in state of Kerala. 6,803 people have injured. In my constituency alone, by elephant attack, 40 people have died in the last 10 years. Sir, so many people have raised this matter here. What is the number of elephants of all over India? It's crossed 30,000 now. It's above the carrying capacity of our forests, sir. Sir, that means we should protect the wildlife, but we have to protect the life of the people who are living outside the forest also. Sir, as per the Supreme Court judgment, buffer zone is going to extend 1 kilometer. That means there are some restrictions should come. In my constituency, there are 8 national park and another wildlife sanctuary also, sir. There are 9 wildlife sanctuaries and national parks. In the surroundings, 1 kilometer buffer zone is coming means the people have to evict automatically because we can't live with the animals. So we have to address that case specifically. Supreme Court permits. There are some relaxations. First, we have to approach CEC, then Ministry of Environment and Forest, and then Supreme Court. It will take more time. It is a time-consuming process. For avoiding that time-consuming process, for excluding the people inhabitant area from the buffer zones, we should have a legislation. That's my request to Honorable Minister. We should have a legislation for avoiding the people inhabitant area and plantation agricultural land from this buffer zone. Union government should intervene in this case, and we should pass a new enactment for protecting our farmers, especially farmer communities, sir. Sir, what about the vermin list? So many people have raised already. As per the new amendment, the vermin list not been there in the new act. Schedule 5 is going to merge with the Schedule 2 of the new amendment bill. That means we can't call all the animals together as vermin. It is true. But vermin should be there, sir. We have the bitter experience about wild boar. Our demand from Kerala state, Honorable Minister is very much aware about that. Wild boar attack is, we can't imagine. Thousands of wild boars are coming in one time and they're destroying the agricultural lands, acres of lands within a time. And if we are announcing it as vermin, we can shoot aside. That is correct. But there is another way. There is no another way. Because it is the survival crisis of our farmer community, sir. So I request on behalf of Kerala, wild boar should announce as vermin. And the definition of vermin by new amendment. As per the new amendment, vermin means wildlife
as per the section 62. Section 62 saying that, 2 minutes, sir. Section 62 saying that all the animals apart from schedule 1. Sir, it should be amended, wherein all the animals, including wild boar, that's my amendment, government granted, sir. Sir, we should have a wildlife management policy should have to adopt. Sir, wildlife must be considered as a renewable resources and their reproduction must be controlled accordingly. To do this in a scientific way, the existing section 12 needs to be amended by incorporating subsection 4 scientific colleagues, sir. Permission must be given for hunting those animals like wild boars that are reproducing at an alarming rate even beyond the capacity of forest area. Section 11 and 12 needs to be amended accordingly, sir. Sir, the farmers are not getting enough compensation. So my demand, my humble demand, we should have a tribunal, like motor accident claims tribunal, for providing enough compensation to our farmers. They are the victims of wildlife attacks. Sir, it is also imperative to establish a human sensitive zone 500 meters to inside the forest to stop the wildlife animals to the There are more speakers from your party, actually. I'm concluding just for one or two sentences. The punishment norms also has to modify, sir. There is an amendment proposed in section 54.4. The money for composition under subsection 1 are 25,000 rupees. It is amended to, or it is raising to 5 lakhs. 5 lakhs. I'm welcoming that. But at the same time, as per section 53, any officials have done anything by section 50 that is illegal confinement or arrest or wrongful seizure, he may be punished by imprisonment for a term of 6 months or with fine of 500 rupees. Sir, it should also has to increase, sir. By these words, I'm concluding. Human life also should be protected. That is the main point I would like to highlight here. Thank you, sir. Srimati Diya Kumari. Thank you, Honorable Chairperson, sir, for giving me the opportunity of speaking on the Wildlife Protection Amendment Bill. Sir, I'd like to begin by thanking our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable Environment Minister for bringing an exemplary and comprehensive bill that will protect native Indian species, improve enforcement of the law, and will ensure that the Wildlife Protection Act 1972 is compliant with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Speaker, sir, our government, under the able leadership of the Honorable Prime Minister, has displayed grit and determination to make India a responsible and a climate-resilient economy. Sir, at a time when global warming is increasing, forests are vanishing, and various species of flora and fauna are disappearing, our visionary Prime Minister has taken strides in the right direction to lead the country towards a more sustainable future. Speaker, sir, India has been a signatory in the CITES for the last 46 years. Earlier governments failed to even consider the implementation of the convention. So much so that in the year 2004, the CITES Secretariat had warned India that the Conference of Parties would suspend trade with India due to non-compliance with the convention. Speaker, sir, I'd like to congratulate our government for incorporating the provisions of CITES in the Wildlife Protection Act as a separate chapter 5th B, which is titled Regulation of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Sir, what has also caught my attention is that the amendments under this bill shift our focus on the conservation, protection and management of wildlife. So we never had a streamlined process for trading in plants and animals, which often led to rampant malpractices in the field. Now the bill regulates wildlife trade as per the convention. Speaker, sir, it is also a timely and necessary bill as it seeks to empower the centre to regulate or prohibit the trade or possession of invasive alien species. This will ensure that the balance in the native wildlife ecosystem is maintained. The bill clearly specifies that the actions of the Chief Wildlife Warden must be in accordance with the management plans of the sanctuary.
This ensures that a consultative process is followed rather than an arbitrary process. Sir, it is pertinent to highlight here that for sanctuaries falling in areas of scheduled tribes, the management plan will be prepared after due consultation with the Gram Sabhas. The involvement of local communities and the concerned Gram Sabha shows the commitment of our government to uphold the federal structure of our country. This will also reduce incidents of man-animal conflict. I think it's very, very important as a representative, former representative from wildlife sanctuary, tiger sanctuary. I think this is a very, I think the government is so committed towards involving local communities. This will also go a long way to reduce the man-animal conflicts that happen, and the local people will feel more involved with the way the sanctuaries are run. Another welcome move is empowering the state boards for wildlife to constitute a standing committee for exercising certain delegated functions. This decentralization process will ensure more localized solutions and faster decision making as it reduces the dependence on the centre and on state level board meetings, because by making a standing committee, a lot of the workload will be reduced. There will be state wildlife board meetings more regularly, because many states like Rajasthan need to they should have more regular meetings which don't happen. So by having a standing committee, the pendency will reduce and the workload also on the state wildlife boards will also reduce, hopefully. So the increase in penalties for violating the provision of the Act will act as a deterrent to crime. This will also safeguard against any practices which may endanger the survival of wildlife in the long run. Sir, I say this with pride that our Honourable Prime Minister is leaving no stone unturned to punish those who try to hinder the wildlife ecosystem. As a representative from the state of Rajasthan, which has 25 wildlife sanctuaries, 5 national parks, and is home to many endangered species, I say this with utmost confidence that the present amendments will go a long way to safeguard our endangered native species and to preserve our natural heritage. Sir, as someone who has a wildlife sanctuary in my current parliamentary constituency, Rajsamand, and has had a national park in my previous Vidhan Sabha constituency, Sawai Madhopur, I really appreciate the amendments proposed in this bill. So I would like to thank the government on behalf of the people of Rajsamand, Rajasthan for this far-sighted bill. The bill will put India at the forefront of preserving biodiversity and conserving the environment. Honourable Speaker, Chairperson, sir, I thank you for giving me the time to speak on the motion. Once again, I'd like to thank our Honourable Prime Minister for this landmark bill and congratulate our Honourable Minister for Environment for the same. Sir, I would like to conclude by saying that I support this bill. Thank you. Samdani. Sir, thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion. Sir, there is no disagreement on the well-recognized fact that the wildlife has to be protected. The forest conservation, environmental protection, they are very important subject. And this bill primarily addresses the protection of wildlife. But, sir, it has a close link. It is directly linked with the safety of human beings. And this bill, though it is addressing that issue, is that those provisions are not sufficient enough to deal with the situation, to solve the serious problem that is challenging the safety of human beings and especially farmers. Sir, this kind of a legislation must have necessary provisions to protect humans and especially farmers among them from the ongoing dreadful attack of the wild animals. Sir, I am not arguing for a human-centric world order. I believe in that system, just like Albert Schweitzer stated that our world view must include even the butterflies that fly in our gardens. I do believe. But, sir, along with that, everything has to be human-oriented. I think the Honourable Minister, who has come with such a very important landmark amendment of this bill,
I think he will be considering these issues and suggestions again while giving the final shape to this legislative piece. Sir, every activity of ours has to be judged on its life-yielding capacity. So every life is important. I do agree. But which is more important, the life of the animal or the life of the human being? There is a famous poetic saying, "Na tu zameen ke liye, na asman ke liye, jahan hai tere liye." So human being is the most important, and in the dignity of human beings. And when we come to that, the forest conservation, environmental protection, it should be there. It has to be given due importance. But sir, not at the cost of human life and human dignity. Every life is life, but dignity of human beings has to be given due importance. Sir, everybody is worried and nowadays species missing. But sir, human beings are also missing. The wildlife attacks on humans, sir, have assumed an alarming proportions, especially in the state of Kerala. Sir, according to Kerala Forest Department data, since the year 2011, 34,875 cases of wildlife attacks are reported. And 1,233 human beings were killed. 6,803 were injured. The state has paid rupees 29.39 crore in connection as compensation with these cases. 27 human deaths in conflicts with wild elephants only took place in the last year only. Sir, in the period between 2016 and 2020, 17,116 instances of crop raid by animals took place. 1,214 cattle lift cases occurred. So, sir, along with that, there is nowadays in Kerala, there is a very serious problem of stray dogs attacks on human beings. I am not going to that because it doesn't come under the purview of this bill. But, sir, similar cases of wildlife attacks, sir, 2 minutes, wildlife attacks are on humans are in other states also. Sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister. The Kerala government had submitted a proposal to the ministry to declare wild boar as vermin, which would make the culling of animal legal. But the ministry turned down the proposal. I would like the Honorable Minister to consider these kind of requests because it is having serious importance with regard to human life. Sir, Minister, in this ongoing session, to a written answer to my question given in the Lok Sabha, the Honorable Minister of State in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, he has stated incidents of wild animal attacks and crop loss due to wild animals have been reported from various parts of the country, including the state of Kerala. But, sir, nothing is concretely done to solve this problem, to face this challenge. Sir, ethics demands, culture demands, human values demand, human dignity and humanity demands that we should ponder on this serious issue very seriously. Please and bring out 1 minute, sir. Please. And bring out strong provisions in our effort, in our attempt, instead of mere tears. Sir, everybody is shedding tears for the suffering suffering persons attacked by wild animals, but nothing concrete is being done. Sir, just like I am reminded of a couplet, Sahil ke tamashayi har doobne walon par. Sahil ke tamashayi har doobne walon par. Afsos to karte hai, imdad nahi karte. Everybody is shedding tears. Something has to be seriously done. I would like to request the Honorable Minister to take into consideration these suggestions. Thank you, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, I stand here to express the views on behalf of CPM party on Wildlife Protection Amendment Bill 2021. At the outset, I support the intention of the government extending the scope of the bill to include conservation, protection and management of wildlife through this amendment. But at the same time, I wish to point out some objections on the various provisions of the bill. I have already given the amendments to the provisions of the bill in detail. Sir, it is a fact that this bill is not based on the professional and public opinion, but it is drafted as per the bureaucratic whims and fancies. Sir, the Standing Committee has also commented that this amendment
will only help to complicate the current provisions for protection of wildlife and purpose of India's commitment to Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora would not be served fully. Instead, the committee has recommended either to bringing in a separate bill for CITES or to restrict to simple amendments. But it is coming with, there are 50 amendments, some of them bringing some confusions also. But the government is adamant that it will go ahead with these amendments. Sir, in addition to the ambit of the bill, I wish to draw the important issues. Some other Kerala speakers also point out that the issue of Kerala people regarding the forest and its protection. Sir, the people living in the forest fringes across the country are living in fear of eviction following the Honorable Supreme Court order for setting up a buffer zone of minimum 1 kilometer from the boundaries of the protected forests. In Kerala alone, 1 lakh families and 2.50 lakhs acres of agriculture land and 24 townships will be affected by this verdict. But the government has not yet shown the willingness to file an affidavit to avoid human settlement from the buffer zone. I know the Honourable Minister is leaning to the request of the Kerala people. Sir, I hope all the members sitting here would agree that life and livelihood of citizens is equally or more important than wildlife. So I request the Honourable Minister to make clear the stand of the government in the Supreme Court immediately. Sir, as per Section 8 of the Principal Act, says about the duties of the State Wildlife Board, which include advising the state government on the selection and management of protection areas. Sir, I request the government to include the declaration of the extent of buffer zone, taking into consideration the density of population, also the duty of the state board in each state. Sir, by this, the concern of the common people could be addressed. Sir, another major issue is the human-animal conflict. Some other speakers also point out that, which has increased many-fold over the years. Not only loss of life occurred due to protected animals like elephants, tigers, and wild buffaloes entering human habitation, but result in huge agricultural loss. But, sir, the amendment bill is silent about the providing assistance for victims of animal attacks. So I request the government to include the national insurance scheme for payment of compensation for loss of life, as well as crops and property, and for injury as suggested by the government of Kerala as part of the bill. So the loss of crop due to wild pigs is a big problem in many states, including Kerala. Sir, only one point. Now the power to declare the wild animals as vermin rests in the union government and the causing difficulty to controlling them. So I request delegate the power to the state also. Hence I request this power is shared with the state government as well for their effective control. Sir, there is a provision in this act to declare the rescue and rehabilitation centers and elephant camps owned by the forest department as zoo. This would resolve the practical difficulties and not feasible. Zoo is a different purpose. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. श्री एसटी आसन। थैंक यू सर, आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अपने में बहुत सक्षम है सर, और जिसकी वजह से आज हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर भी सके। आप अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, अमेंडमेंट्स में हम आपके साथ हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके अमेंडमेंट्स को। लेकिन मैं कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं मंत्री जी के, खासतौर से आपके थ्रू, कि एक जो प्रॉब्लम है जब वाइल्ड एनिमल मैनीटर हो जाता है, खासतौर से टाइगर जब मैनीटर होता है, तो उसको हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में धारा 11 में प्रोविजन है कि उसको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन हमारे अधिकारी आजकल इतने प्रेशर में हैं एनजीओस के, क्योंकि आपको मालूम है लोग अपने आप को प्रोमिनेंट होने के लिए बहुत सी एनजीओस खोल लेते हैं, वाइल्ड लाइफ लवर बन जाते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो उनको सिर्फ किल करने का ऑर्डर नहीं देते बल्कि वो ट्रैंकुलाइज करने का ऑर्डर देते हैं। अब इस समय भी रामनगर रेंज के अंदर मोहान के पास एक टाइगर मैनीटर हो गया है। उस टाइगर ने एक जवान आदमी को अभी 20 दिन पहले मारा है।
अगले दिन जब उसकी लाश को ढूंढा गया तो सिर्फ उसका इतना हाथ लोगों को मिला, बाकी पूरे खा गया। उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए कम से कम 15-20 मीटर पे जब टाइगर होगा तो ट्रैंकुलाइज होगा, और 15-20 मीटर पे एक टाइगर, मैनीटर टाइगर के पास जाना आसान बात नहीं है, कोई नहीं पहुंच पाता। और ट्रैंकुलाइज आप रात में नहीं कर सकते। ट्रैंकुलाइज अगर आपने कर भी दिया तो आधे घंटे बाद वो ट्रैंकुलाइज होता है, और वो जंगल के अंदर कहां जाके बेहोश हो गया आपको पता नहीं, आधे घंटे बाद वो फिर होश में आ जाता है, उठ के चला जाता है। क्यों नहीं शूट करने का ऑर्डर दिया जाता? शिकारी लोग शूट करते हैं, हमेशा से होता चला आया है, क्योंकि शिकारी 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक इस टाइगर को मार सकते हैं, और शिकारी रात में भी मार सकते हैं। ट्रैंकुलाइज रात में नहीं किया जा सकता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि कम से कम इंसानी जानों की कदर को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि जानवर को जल्द से जल्द मार दिया जाए। दूसरा सर, हमने देखा कि हमारे एरिया के अंदर ल्यूपर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद के तहसील कांठ, तहसील ठाकुरद्वारा और बराबर के जिलों में आए दिन ल्यूपर्ड की, चीतों की घटनाएं होती रहती हैं। जानवरों को मारते हैं, इंसानों को जख्मी करते हैं। ये इन लोगों को, इन चीजों को, इन ल्यूपर्ड्स को पकड़कर इनको अपने डेस्टिनेशन पे, अपने हैबिटेट में क्यों ना भेजा जाए। अब जहां हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, मंत्री जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हम बातें बहुत करते हैं, रामनगर रेंज के अंदर अभी सैकड़ों बीघे का वर्जिन फॉरेस्ट काटा गया है, सैकड़ों बीघे का, और जिसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ थे कि जिसमें 5 आदमी भी अगर ऐसे खड़े हो तो पेड़ की सरकमफ्रेंस को नहीं कवर कर सकते थे। उसको काट दिया गया। उन अधिकारियों की साठगांठ से हुआ, कैसे हुआ, इसका आपको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। सर एक मिनट, मंत्री जी, जिस तरह से जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे एरिया में बंदर बहुत है, और बंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आस्था का भी सवाल है उसमें। तो बंदर फसलों को नष्ट कर रहे हैं। छोटा किसान, मैं आपको सही बता रहा हूं कि छोटा 4-5 बीघे का किसान गन्ना नहीं बो रहा है, बंदर उसको खा जाते हैं। जंगली सुअर बहुत ज्यादा है और नीलगाय है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी मारने का ऑर्डर होना चाहिए या पकड़ने का ऑर्डर होना चाहिए, और जंगली, और ये नीलगाय का नाम बदल के अगर आप जंगली घोड़ा कर दें तो और आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमती अपराजिता सारंगी। Thank you, Chairperson, sir. It's both a privilege and an opportunity to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. I would start by saying that the term wildlife was coined by William Hornady in 1913 in his book, Our Vanishing Wildlife. All of us know what does wildlife imply. Wildlife implies all the biotic elements of the earth, including plants, animals, birds and microbes of the world, excluding man, domestic animals and cultivated plants. Sir, this particular bill is an example of the fact, is an indication of the fact that our government, Honorable Prime Minister Modi's government, has always tried to seek opinion of all as regards the amendments to be made. The other bill also I had spoken on, it had also gone to the Parliamentary Standing Committee. This particular bill had also been sent by the Ministry to the Parliamentary Standing Committee. Now I must mention here that this bill had been tabled in the Lok Sabha by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change on December 17, 2021. It was sent to the Parliamentary Standing Committee on December 25, 2021. And after careful examination, scrutiny and with a set of recommendations, the Standing Committee sent it back to the Lok Sabha on April 21, 2022. And as we know, it seeks to amend the Wildlife Protection Act 1972.
Sir, wildlife conservation is the practice of protecting plant and animal species and their habitats. But sir, when we take up a bill for amendment and we examine the contours of the bill, it's extremely important to understand why the bill has been brought, why has the bill been tabled, and why there is a requirement for amendment in the Act. It's important to understand what does wildlife mean? What is the definition of wildlife? Sir, I'll take you to a definition by the World Bank. The World Bank had said wildlife is a crucial component of the ecosystem and it forms the livelihood of hundreds and millions of rural poor. And that is why we need to take this particular thing very seriously. Sir, at a time when the wildlife all the world over is under threat because of habitat conversion, poaching and fragmentation, it's extremely important for all of us to sit with the policy makers, to work with the policy makers to safeguard wildlife protection in pursuit of poverty alleviation and inclusive growth. Shall I also take you to the Constitution of India? Article 51AG of the Constitution of India clearly states that it's the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests and wildlife. And that is why all 140 crore citizens of this country must protect wildlife, because it is something which has been told to us by the Constitution of India, which we, all of us, uphold in high esteem. Sir, as has been said by all the speakers to my right and to my left, that this bill seeks to increase the number of species protected under the Act so far. And as Honourable Minister, when he started the whole discussion, said, this particular bill intends to implement CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Sir, I'll not take much time. I will just say that there are 7 salient features. I'll very briefly touch upon these salient features. Number 1, the bill provides for the central government to designate a management authority which would look into the grant of export and import permits. It's very important. Every person engaging in the trade of a scheduled specimen must report the details to the management authority. This is one extremely important, and I would like the House to actually kind of keep this particular thing in mind. So number 2, rationalizing schedules. Right now, the Act has 6 schedules. This bill will bring it down to 4 schedules. Vermin species is getting eliminated. Very briefly, I'm touching upon the salient features. The third, many of my friends on the right have mentioned. At the cost of being repetitive, I would say that we also talk of invasive alien species. So this refers to plant and animal which are not native to India and whose introduction to the country would adversely impact our wildlife and their habitat. So we have to handle them very carefully, sir. The bill empowers the central government to regulate and prohibit the trade of these invasive alien species. So fourth, control of sanctuaries. One of my friends to my left talked of the Ranthambore sanctuary. So the bill specifies that the actions of the Chief Wildlife Warden should be in accordance with the management plans of the sanctuary. Very briefly, I wanted to touch upon the points. So there are 565 wildlife sanctuaries in our country, and we all need to protect them very well. So the 5th point is the conservation reserve. So under the Act, the state government may declare areas adjacent to the national parks or the sanctuaries are conservation reserve. Now here the bill is also including the central government. Central government, if it so desires, can actually declare a particular area adjacent to the national park or sanctuary as a conservation reserve. And this is definitely, I would say, a wonderful, a welcome addition to the Act. Sir, surrender of captive animals, very important. The bill provides for any person to voluntarily surrender any captive animals or animal products to the Chief Wildlife Warden, no compensation. Sir, last, most important is, of course, the talk about fines. Fines have been increased, and this reveals the fact that we are very
much concerned about the protection, the conservation of wildlife and the habitat. Fines have been increased from 25,000 to rupees 1 lakh, and for specially protected animals from at least rupees 10,000 to at least rupees 25,000. Sir, I remember when Honourable Minister had taken over as the Minister of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, he had made a statement. Maybe many of you might not have marked. I had read it and I was impressed. And I really, I appreciated. He had said, Environment Ministry is not an obstacle but a solution provider. So the second thing I would definitely like to mention here, I would like to quote Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi has said, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are being treated. Very interesting. And sir, of course, a couple of months back, we were all listening to Man Ki Baat on the last Sunday of the month. And our Honorable Prime Minister in that Man Ki Baat had invoked a Tamil poet, and he wanted to convey a very, very important message to all of us. And sir, the message I would like to place before this esteemed August House, before my esteemed colleagues. Sir, he had said, what we know is just a handful of sand. What we do not know is like the universe in itself, and similar is the case with the biodiversity of the country, that is India. And so we need to know about biodiversity. We need to know the needs of wildlife and the habitat. We all need to work together. This is a very meticulously drafted bill, and I would just make an appeal to all my esteemed colleagues to kindly support the bill. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for affording this opportunity to take part in the discussion on the Wildlife Protection Amendment Bill 2022. Sir, the Wildlife Protection Act of 1972 is the landmark legislation in the legislative history of Indian Parliament. The Act was then amended in the year 1991, and I would like to appreciate the government and the minister in taking initiative in making appropriate changes in the appropriate time so as to update the Wildlife Protection Act of 1972 as amended in the year 1991. Sir, it is an admitted fact that the ecological and the environment security of the country, we cannot discuss in the Indian scenario alone. We have to discuss in the global scenario. We have had a very detailed discussion about the climate change conference which has recently took place, and had a very good detailed discussion in this House. And at the same time, I would like to state that the ecological security or the environment security means the protection, safety of the wild animals, birds and plants is also part and parcel of the ecosystem So that is why it is the prime responsibility of each and every citizen or the human as well as the entire society to see that the wildlife, especially the wild animals, birds and plants are protected. Safety and security of these things have to be taken into the prime consideration. Sir, coming to this amendment bill, even the first thing is regarding the preamble is to be amended. I think that it is having a wider perspective, because in the original bill, in the principal bill, it is being the protection of wildlife. Now we are amending it to as protection, management and conservation. That means giving wider perspective as far as the wildlife is concerned, because management of the wildlife as well as the conservation of the wildlife, it is need of the hour. Definitely I fully support this concept by which the animal, the wildlife is being protected, not only protected, we have to conserve as well as to manage. Definitely the human-animal conflict will definitely come within the purview of this management. And also this buffer zone management, definitely it will come within the pub. I think that everything, environmental aspects, ecological aspects, everything will come under these two words, that is management and conservation as well as protection.
So I fully support and agree, and I would like to appreciate the Honourable Minister in bringing such an amendment to the preamble itself, by which we are widening the perspective and concept of this wildlife. And coming to another point regarding the conservation and the only apprehension which I would like to make is that whether the government, especially government led by BJP and NDA since 2014, whether you are following or abiding the principles of this wildlife protection, security and their safety. See, because this government is always talking of the mantra of development. It is quite unfortunate. I can very well cite series of examples. Because of the paucity of the time, I am not going to that. Because in the mantra of development, you are not taking into consideration regarding the environmental aspects, the ecological aspects, even the protection under the Wildlife Act is being ignored in almost all the cases, even in the mining and in so many other cases. It is being, because in the mantra of development. Development means what? It should be a sustainable development. It should be based on the principles of the ecological safety and the environment safety. It should be based on that. But unfortunately, if we examine the 8 years of experience of this government in power, if you critically examine if the Honourable Minister, if you have an introspection among yourselves, it can very well seen that most of the stringent rules and regulations, so as to have the protection of the environment, so as to protect the wildlife, is being diluted by means of series of policy decisions as well as amendments to the existing acts. But this act, I fully agree with you, but at the same time, mere enactment of the piece of legislation is not sufficient to protect the wildlife, but strong political will is required so as to protect this wildlife as enunciated in this law. Sir, coming to a particular point, with that point I will conclude my speech. That is regarding the elephants. Sir, you may kindly see the bill have a huge influence over the... We are having a cultural and festive spirit of a state like Kerala. That is regarding the protection of tamed elephants, which are an integral part of many festive of the state of Kerala, such as the UNESCO recognized Thrissur Puram festive, which showcase the cultural integrity that the state of Kerala stands for. Sir, in Kerala alone, there are 437 tamed elephants, out of which 39 elements belong to the forest. Every year, an average of 30 elements are dying. We know that the cultural festive, the ritual festive elephant is a must. Sir, there is a definition in clause 2, subclause 6. In the clause 2, subclause 6, if you examine it, there was a definition prior to this amendment. There was a definition by which it was included in section 2.6. Clause 6 of the bill, by which it is included in cattle. Yes, it's included in cattle. Subsequently, in the 1991 amendment, it is being omitted. And at the same time, it is there in part 1 of the schedule also. Please, 1 second. I'm talking on the bill within the sections, provisions. And so my submission is this tamed elephants have to be protected. The tamed elephants has to be protected. My suggestion, I'm not going to the details. My amendment is there. My suggestion is it is to be incorporated in the schedule because Asiatic elephant is there. Along with the Asiatic elephant, excluding the tamed elephant because so that it can be protected. I fully agree that a new provision has been incorporated by which the ownership, the transfer and ownership is well accepted. I totally oppose the recommendation made by the standing committee headed by Sri Jairam Ramesh that it can be only for the trust, temple trust and all these things. Individuals should also be given authority to own, transfer and transport these elephants. With these words I conclude. Thank you very much. Sri Ganesh Singh. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 जो 1972 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा यहां पर प्रस्तुत किया गया है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची की प्रविष्ट 19 खाक के रूप में वन्य प्राणियों और पक्षियों की सुरक्षा को सूचीबद्ध किया गया था
और आज ऐसे दिन पर चर्चा हो रही है जब शेष नाग की पूजा हो रही है। आज नाग पंचमी का त्योहार है और आज वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से चर्चा हो रही है। साइटिस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत देश में अभी तक इसको विधिक मान्यता नहीं मिली थी। हमारे मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये एक महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया है। अब साइटिस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता को विधिक मान्यता मिल जाएगी इसके पारित होने के बाद, और इसमें राज्यों के अंदर इसमें कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलने वाले हैं, जिसमें अब एक कमेटी का भी गठन होगा और राज्य स्तर पर वन्यजीव बोर्ड की बैठकें भी सही समय पर हो सकेंगी। भारत में विधिक मान्यता न मिल पाने के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोके जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन साइटिस को विधिक मान्यता न दिए जाने के कारण मंत्रालय द्वारा बहुत कई बार प्रयास किए गए, लेकिन इसको जाकर के अब एक सफलता के मार्ग पर पहुंचाया गया है। राज्य स्तर पर राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आमतौर पर देखा गया कि उनकी व्यस्तता के कारण बैठकें होती नहीं थी और ये महत्वपूर्ण विषय हमेशा अछूता रह जाता था। लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो राज्यों के वन मंत्रियों को इसकी अध्यक्षता का अधिकार दे रहे हैं और इससे अब अपने अपने राज्यों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो भी काम करने होंगे उसको उनको पूरा अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह इन संशोधनों के आने से प्रत्येक राज्य में राज्य वन्य जीव समिति के सहयोग हेतु एक स्थायी समिति का भी गठन होगा, जिसमें इस प्रस्ताव है, और इससे राज्य स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण को सुचारू रूप से निर्णय लिए जाने का एक अधिकार उनको मिल जाएगा। इसी तरह से एक और बहुत बड़ा निर्णय इसमें होने जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से। यदि किसी नए नेशनल पार्क का निर्माण करना है तो उसमें उसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी गांव थे उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे और उससे बहुत बड़ी परेशानी वहां के लोगों को, रहने वालों को होती थी। लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जब तक उसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक वो सारे अधिकार उनके पास मुहैया होते रहेंगे, उनको सुरक्षित दिए जाएंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। हमारे यहाँ पन्ना नेशनल पार्क है और वहां पर बांधवगढ़, हमारे यहाँ बांधवगढ़ भी, मध्य प्रदेश में कई पार्क है इस तरह से। जो उस क्षेत्र में आने वाले गांव हैं वो गांव पंचायत के रूप में भी हैं, लेकिन वहां विकास के सारे काम बंद पड़ते हैं। उनको परमिशन लेना पड़ता है, अगर पंचायत भवन भी बनाना पड़े, स्कूल भी बनाना पड़े तो वो नहीं बना सकते और वो तमाम सारी दिक्कतें। हमारे यहाँ तो पन्ना में एक डायमंड की खदान है और वो डायमंड की खदान नेशनल पार्क के भीतर है, इस वजह से बंद हो जाती है। उसके आसपास के गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें राज्यों को जो अधिकार आप दे रहे हैं तो इनको भी इसमें अगर शामिल करेंगे तो मुझे लगता है कि जो कठिनाइयां लोगों को उठानी पड़ रही हैं उससे इनको मदद मिल पाएगी। इस बिल में वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित कनेक्शन साइट्स को लागू करने का ये इसमें प्रावधान किया गया है। भारत की देशी प्रजातियों का भी संरक्षण है इसमें। कानून के प्रवर्तन में सुधार का प्रावधान भी किया गया है इसमें। सुरक्षित क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए भी संशोधन है। यह अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। इसमें वनस्पति और जीव दोनों शामिल हैं। देखा गया है कि सूची प्रजातियों के अवैध व्यापार और शिकार को प्रतिबंधित भी इस प्रावधान के तहत किया जाएगा। अधिग्रहण किए गए जीवित प्राणियों की बेहतर देखरेख के लिए संशोधन है इसमें। बहुत ऐसी प्रजातियां हैं जो आज भी अब दुर्लभ हो चुकी है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, जैव विविधता पार्क पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे हमारी पहाड़ियां हैं जिनमें दुर्लभ प्रजातियों के पौधे, जीव जंतु, पक्षियां सब कुछ है।
लेकिन वो धीर वनस्पतियां धीरे 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 वो लुप्त हो रही हैं। अगर उनको संरक्षित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो प्रजातियां बचेंगी। केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित शर्तों के अनुसार स्वामित्व प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों द्वारा जीवित प्राणियों के अंतरण या परिवहन करने के लिए उपबंध स्थापित कर रहा है। ये विधेयक नियामक प्राधिकरण स्थापित करता है और सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, सामुदायिक आगारों और संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार भी देता है। अधिनियम में पौधों और जानवरों के शेड्यूल को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और निगरानी प्रदान करेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, चूंकि ये वन्य संरक्षण का मामला है, वन्य जीवों के, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे अनोखा सफेद शेर, सफेद बाघ पहली बार हमारे बिंद की धरती में मिला था और 1951 में वहां के रीवा के राजा ने उसको आखेट के दौरान उनको एक शावक को पकड़ा, उसको संरक्षित किया और फिर उसमें से कई संतानें पैदा हुई। आज दुनिया के भीतर जितने भी व्हाइट टाइगर हैं, उसकी जननी अगर कोई तो हमारे बिंदु क्षेत्र की जननी है। और उसको अभी हम लोगों ने 2016 में एक व्हाइट टाइगर सफारी बनाई है। उस व्हाइट टाइगर सफारी को हमने 100 हेक्टेयर में स्थान दिया है और 25 हेक्टेयर में उसको खुले तौर पर अभी भी 3 शावक है वहां व्हाइट टाइगर के, 28 प्रजातियां हैं वहां और लगभग 200 से ज्यादा ऐसे हमारे जीव जंतु वहां पर हैं जिनका संरक्षण हो रहा है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऐसे उनके संचालन में थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इको पार्क भी हमने बनाया है। इको पार्क बना करके हमने उस जंगल की पूरी सुरक्षा करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जितने भी पार्क हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों या देश के किसी दूसरे राज्यों में हों, उनको भी कहीं न कहीं इनको संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान अगर इस एक्ट के माध्यम से हो सके या एक्ट के बाद फिर नियमों को बनाते समय पर माननीय मंत्री जी अपने विभाग का ध्यान आकर्षित करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मदद इन वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा में हो सकती है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री हनुमान बेनीवाल। सभापति महोदय, सदन में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है। देखो यार, फास्ट बोलने दो 500 में हमारे मंत्री जी राजस्थान चाहते हैं, ये सब हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विशेष रूप से राजस्थान के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना है, वन्य जीव क्षेत्र, अपना वन संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने का भी बहुत बड़ा भूभाग है राजस्थान का, इस ओर आप विशेष ध्यान दें। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिखे अनुसार विधेयक वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ भारत दुनिया के सबसे बड़े जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि संरक्षित वन्य जीवों के खिलाफ अपराध उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि बढ़ाने से बड़ा सुधार आएगा, लेकिन कानून में कठोरतम से कठोरतम सजा और प्रकरण में त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि ICUN के अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में भारत में पाई जाने वाली 239 जीवों की प्रजातियां लुप्तप्राय, जिसमें स्तनधारियों की 45 प्रजातियां, पक्षियों की 23 प्रजातियां, सरीसृप की 18 प्रजातियां, उभयचरों की 39 प्रजातियां और मछलियों की 114 प्रजातियां शामिल। मेरे राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन की प्रजाति भी लुप्त प्राय होने को, जो चिंताजनक है। मंत्री महोदय, राजस्थान के अंदर आप देखते थे, आप भी वहीं से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं, 35, 40, 30 साल पहले की बात है, हम बच्चे हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, गिद्ध आते थे, कोई पशु मरता था गांव के अंदर तो गिद्ध अपने आप आते थे, उस पशु मरे हुए पशु का मांस वो खाते थे, किसी तरह की दुर्गंध नहीं फैलती। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पशु मरते रहते हैं और उनको उठाने वाला नहीं, हाहाकार मच जाता है, दुर्गंध फैल जाती है, कई बीमारियां इससे आगे, तो गिद्ध भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी आपका ध्यान देना चाहूंगा, आज सुबह एक डिजिटल पत्रिका पढ़ा, उसमें संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की 19-20 के एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि भारत में भी संकटग्रस्त प्रजातियों का बढ़ता अवैध व्यापार चिंताजनक और इसके लगातार बढ़ने को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। मंत्री जी, वन्य जीव प्रेमी और ऐसे मामलों को लेकर लिखने वाले कई लोग चिंतित है। एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे 18 दिसंबर 21 को द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के हवाले से बताया कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से हाथियों को रिलायंस अंबानी द्वारा संचालित राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के सुपुर्द किए गए। इसी खबर में बताया गया कि रिलायंस ने जामनगर गुजरात में स्थापित अपनी रिफाइनरी के नजदीक 280 एकड़ क्षेत्र में एक चिड़ियाघर बनाया, जहां वन्य जीवों की कई प्रजातियों का प्रबंधन किया जा रहा है। इसलिए जीवित हाथियों के ट्रांसपोर्टेशन को वैध बनाने की पहल ये विधेयक कर रहा है। हाथियों के विषय में प्रस्तावित कानून के प्रावधान वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में प्रगति को मिटा देने जैसे हैं। इस संबंध में जब आप जवाब दें तो जिस स्थिति को जरूर स्पष्ट करें
कि किसी तरह का अवैध परिवहन कोई किसी भी हालत में नहीं करे, ये इसके अंदर आप बताएं। मंत्री, जो संशोधन आपने इस विधेयक में किए उसको लेकर कई तरह की शंकाएं। आज लोगों का कहना कि केंद्र सरकार ने लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाने अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों को लागू करने के नाम पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में कई प्रकार के संशोधन पेश किए और इसके कारण लाभ होने के साथ वन्य जीवों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हाथियों का व्यापार शुरू हो सकता है और मौजूदा कानून के तहत लकड़बग्गा, लोमड़ी, सियार जैसे जानवरों को मिली सुरक्षा छीनी जा सकती है। नतीजतन इन जानवरों की हत्या करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके चमड़े के गैर कानूनी व्यापार में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके साथ ही केंद्र के प्रस्तावित संशोधन के चलते राज्य वन्य जीव बोर्ड के करीब निष्क्रिय हो जाने की आशंका जताई गई है। कहा गया है कि राज्य वन्य जीव बोर्ड की जगह छोटे दर्जे की समिति बनना प्रदान किया गया, जिसके बाद न तो फैसले देने की पर्याप्त शक्तियां होगी और न ही ये जवाबदेह होगा। इस पर भी मंत्री जवाब दे तो स्पष्ट करें कि किस प्रकार इस बिल के संदर्भ में जो जन आशंकाएं उनका निराकरण आप करेंगे। इस बिल के प्रभावी होने के बाद ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी स्टेट को वन भूमि पर खनन सहित गैर वन कार्यक्रम केंद्र की स्वीकृति जरूरी है। ऐसे 31 मार्च 2022 तक विगत 10 वर्षों में राजस्थान में 145.45 हेक्टेयर और देश के विभिन्न राज्यों में 38,846.7 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन की अनुमति किया गया। क्या आप राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में ऐसी दी गई अनुमति का रिव्यू करवाने की एक टीम गठित करवा कर जांच करवाने का विचार रखते हैं कि कई प्रकार की दी गई अनुमति की आड़ में वन क्षेत्रों में अनुमति से अधिक क्षेत्र में तो खनन नहीं हो रहा है और वन क्षेत्रों में खनन की समस्त गतिविधियों में पाबंदी लगाने को लेकर आपका क्या विचार है, ये आप जवाब में जरूर दें। हमारे राजस्थान प्लीज कंक्लूड प्लीज सभापति महोदय, राजस्थान के भरतपुर जिले में पहाड़ों को बचाने के लिए अभी हमारे अवैध खनन को रुकवाने के संत विजयदास जी महाराज को आत्मदाह करना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। वहां के जिम्मेदार उनके द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान सोते रहे, सीबीआई जांच की मांग उठी और उस क्षेत्र में जो सरकार ने उसको संरक्षित क्षेत्र तो घोषित कर दिया, लेकिन कई मंत्रियों के क्रेशर हैं, कई विधायकों के क्रेशर हैं, सीबीआई जांच की मांग उठी और ईडी वहां कार्रवाई कर सकती है। ये मैं मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाबा विजयदास जी ने जो आत्मदाह की, वो बलिदान दिया, वहां ईडी की कार्रवाई आप जगह जगह ईडी की कार्रवाई करा रहे हैं, तो वहां भी करवा दें आप ईडी की कार्रवाई। तो कम से कम राजस्थान में भी ईडी की कार्रवाई कम हुई साहब। हम चाहते हैं कि जो खनन माफिया, जो मंत्री विधायक उस क्षेत्र से जिन्होंने धन अर्जित किया और एक मिनट साहब बात तो समाप्त करना, राजा जी बात वाइंड अप प्लीज, तो इसके अंदर आप ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कराएं। साहब 1 मिनट में मेरा लास्ट, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए वन्य जीव पेड़ों की जो महत्ता है उसको सब परिचय। जैसे राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया, ये इतिहास जानता है। मेरा लास्ट में समाप्त कर रहा हूं साहब, हमें फॉरेस्ट को बचाना है, लेकिन माइनिंग माफियाओं, होटल व्यापारियों के दबाव में आज वन क्षेत्र संकट में। मेरे प्रदेश के चूरू जिले के स्थित ताल छापर अभियान, जिसमें 3000 से ज्यादा काले हिरण है, इसमें सुधार के स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका इको सेंसिटिव जोन घटाने का फैसला किया, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर इससे क्या मंत्री जी इस पर ध्यान दें। लास्ट में मेरा समाप्त कर रहा हूं साहब, प्लीज वाइंड अप नाउ प्लीज। आखिरी साहब, आखिरी एक मिनट है ना, 1 मिनट। राजस्थान में संरक्षित गोचर की भूमि को, जितनी हमारी गोचर है उसको विकसित करने, अंगोर की भूमि को संरक्षित कर उन्हें गौशालाओं के लिए आवंटित करने का गो अभयारण्य बनाने की जरूरत है, क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए जब प्रावधान हो सकते हैं तो गायों के लिए भी क्यों नहीं। अभी गायों में लंपी स्किन बीमारी फैली हुई है, उस पर नियंत्रण जरूरी है। आपके मंत्री संजीव बालियान जी ने संज्ञान लिया, टीमें भी राजस्थान के अंदर भेजी, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गाय को बचाया जाए। राजस्थान से इसकी पहल आप मंत्री जी करें। एक ऊंट का मामला साहब, लास्ट मेरे स्टेट का ऊंट जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, बहुत ही विशेष। श्री रविंद्रनाथ कुमार, एक सेकंड लास्ट समाप्त करना। रविंद्रनाथ कुमार, 1 मिनट सभापति। You already took 7 minutes instead of 5. So many speakers are there. Minister has to reply. ऊंट के बारे में मैं कह रहा था मंत्री जी, ऊंट विलुप्त होता जा रहा है, राज्य पशु का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ऊंट को कैसे बचाया जाए। ऊंटों के जो मेले पड़ते थे हमारे नागौर, पुष्कर, तमाम जगहों पर, आप अजमेर से पट गए हैं, ऊंट को हमें बचाना है। राज्य पशु का दर्जा घोषित कर दिया, लेकिन इससे लोगों ने ऊंट पालना छोड़ दिया। ऊंट को हमें बचाना, ऊंटनी के दूध से किस तरह की। रविंद्रनाथ कुमार प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट रविंद्र कुमार। बचाया जाए और गाय को बचाया जाए और वन्य जीवों को बचाया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू चेयरपर्सन सर to allow me to speak in support of this bill, the discussion on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021.
Sir, wildlife conservation is ingrained in our ethos and has always been an integral part of our tradition and culture. Sir, I belong to Theni in Tamil Nadu, a district with nearly 36% forest cover, much higher than the state average of 33%, and I am extremely delighted to support this bill brought by our government. I am keen admirer of our Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupender Yadav ji, who has always taken effort to promote futuristic, inclusive and sustainable development. And I wish to thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who always emphasized the principle of climate change aimed at providing a level playing field to all communities across the world. Sir, under Clause 30 of this bill, the central government will designate management authority that will grant permit for export or import for trade of specimen. Sir, this historic combination and coordination of administration and science by our NDA government will certainly balance our wildlife. Sir, Clause 13 of the bill provides that management plans for the sanctuary shall be prepared after due consultation with the concerned Gram Sabha. This noble and democratic plan of involving the Gram Sabha comes from the idea of an inclusive India as set forth by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Before concluding, sir, I have a few submissions that I wish to place before the government and to the Honorable Minister of Environment. Sir, around 25,000 peaceful forest dwellers and people have been living in the areas under Kadamalai Maile Union, mainly the Panchayat of Megamalai, Varsanadu, Mailadumbarai, Kumanantolu, Muttalamparai, Tangamalpuram and other areas under Megamalai Forest Region of Generation, which comes under in my Theni parliamentary constituency in Tamil Nadu. These 25,000 brothers and sisters have lost their homes and livelihood as a consequence of an errors, arbitrary, improper and faulty inclusion of their dwelling places under Megamalai Wildlife Sanctuary in 2009 and Sirivilibuttur Megamalai Tiger Reserve in 2021 by different government orders. It has affected the right to life and livelihood of forest dwellers and people of Megamalai. Honorable Chairperson, sir, I sincerely support that wildlife should be preserved and protected, but at the same time, the fundamental rights to life of the forest dwellers and people living in forest must also be protected under Article 21 of the Indian Constitution. Sir, I finish allow me for 1 minute. Sir, there is a Wildlife Protection Act empowers the National Board for Wildlife to recommend alteration or denotification of the area declared as protected area. The board is performing its duty very well, but due to large size of the country and population, it may not be possible for the board to reach every affected person. So I request the government minister to allow every affected person to file complaints before the board by extending its jurisdiction through this bill. I will give the affected peoples like brothers and sisters of Megamalai Forest an opportunity to receive justice from our government that always upheld justice to every section of the society. And also I request the government through you, sir, I conclude, to kindly refer the Megamalai Forest subject to the National Board for Wildlife. The board may consider recommending a detailed examination and appropriate scrutiny of the NRS surveys that become the basis of notification of the concerned area of Megamalai Forest as a protected area. Sir, such action will enhance the confidence and trust of the citizen on our government. It will give a opportunity for the affected people to get back to their lost homes in the Megamalai forest. This bill is a great step towards the protection and effective conservation of wildlife. So I support this bill. Thank you, sir. Janardhan Mishra. धन्यवाद सभापति महोदय।
मुझे आपने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा करने के लिए अनुमति प्रदान की। वास्तव में ये विधेयक इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की प्रतिष्ठा और उसका संकल्प परिलक्षित होता रहे, वो इस विधेयक के माध्यम से परिलक्षित होता है। जैसा कि इस विधेयक के माध्यम से CITEC जो वन्य वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों और के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समय कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फैना सरकारों के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि वन्य पशुओं एवं पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के प्रति संकट उत्पन्न न हो। और इसलिए आधार पर इस विधेयक में CITES के तहत पौधों और पशुओं के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस कन्वेंशन से देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करने की आवश्यकता होती है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन भी जीवित पशुओं के नमूनों के स्वामित्व को विनियमित करने का प्रयास करता है। साथ ही इसमें ये नमूनों के व्यापार के निर्यात और आयात को परमिट प्रदान करता है। Please continue. He was sitting continuously for more than 3 hours. में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति के लेन देन के विवरण के प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अनुसार प्रबंधन प्राधिकरण के एक नमूने के लिए एक पहचान चिन्हित का उपयोग कर सकता है। वन्यजीव संरक्षण विधेयक किसी व्यक्ति के नमूनों को पहचान चिन्हित करने में, संशोधित या हटाने में निवारित करता है। महोदय, इस विधेयक के माध्यम से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात, व्यापार, स्वामित्व व प्रसारण के विनियमन अथवा प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। ये जैसा हमारे यहाँ एक गाजर घास नाम के एक विदेशी पौधा आया, उसने तमाम सारी, जैसा भी गणेश सिंह जी कह रहे थे कि हमारे इलाके के तमाम सारी छोटी छोटी जड़ी बूटियों को जो विलुप्त हो गई एक विदेशी पौधे की वजह से, गाजर घास की वजह से, इस तरह के जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, इस विधेयक के माध्यम से इसमें रोक लगेगी और हमारी जड़ी बूटियों को, हमारे जो स्थानीय पादप है, उनको संरक्षण और उनके वृद्धि करने में ये सहायक होंगे। और इससे ये पर्यावास पर और इनके वन्य जीवों के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार किसी अधिकारी के आक्रामक प्रजातियों को जब्त करने तथा उसका निपटारा करने का अधिकृत करती है। महोदय, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा अनुमोदन के अनुसार तैयार किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात इस विधेयक में की गई है कि स्थानीय समुदायों के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास होगा, साथ ही साथ वहां पर रहने वाले जो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, वहां के स्थानीय पानी की सुविधा, कृषि की सुविधा, इसका पूरा उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा महोदय, ये तो ठीक है, लेकिन वन्य जीवों के कारण जो पशुधन, मानव जीवन की हानि और उसके साथ ही साथ कृषि की हानि होती है। नील गायों के माध्यम से, रोज हमारे यहाँ कहते हैं, रोज के माध्यम से जंगली सुअर के द्वारा किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है। परंतु वन विभाग के जो कानून हैं, इनके मुआवजे के लिए, इनके क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए इतने उलझे हुए हैं। प्लीज कंक्लूड। नहीं, एक मिनट सर, कि इन कानूनों की वजह से किसानों को समुचित मुआवजा नहीं मिल पाता। वो इतना पर्याप्त है कि जो नुकसान होता है उसकी भरपाई किसान को नहीं हो पाती। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से आग्रह कि पूरे देश में एक समन्वित कानून बनाया जाए, एक स्पष्ट दिशा निर्देश हो कि इन वन्य पशुओं से जो क्षति किसानों को होती है, कृषकों, उनको, मनुष्यों को होती है, उनकी भरपाई शीघ्र से शीघ्र हो। और इसके साथ ही साथ रीवा में, जैसा अभी आदरणीय गणेश सिंह जी
कह रहे थे कि हमारा सीमावर्ती जिला है व्हाइट टाइगर सफारी, जहां से व्हाइट टाइगर जिस इलाके से हुआ पूरी दुनिया में फैला, वहां पर 3 अभी व्हाइट टाइगर हैं, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता अभी कोई नया शिशु जन्म नहीं लिया है। उसका जांच कराई जाएगी क्या कारण है कि वो अभी मादा और नर होने के बावजूद भी नए शावक जन्म नहीं ले रहे हैं। इसका अनुसंधान कर और इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि 2 और युवा नर और मादा व्हाइट टाइगर शावक रीवा मुकुटपुर व्हाइट टाइगर सफारी को प्रदान किया जाए और उनकी संख्या वृद्धि कैसे हो, इसके लिए परामर्श करके और संख्या वृद्धि का प्रयास किया जाए। धन्यवाद, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं समर्पण करता हूं। जनाब, इस अमेंडमेंट बिल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के बहस में शिरकत की इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, ये जो कानून लाया जा रहा है ये इट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑब्लिगेशन जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्लिगेशन के हिस्से के तौर पर लाया जा रहा है। तो एक एफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क फराहम करने का प्रयास है ताकि वाइल्ड लाइफ का बचाव किया जाए। सिवाय सेक्शन 43 के जिसमें एक स्कोप रखा गया है ताकि एलिफेंट को एक्सप्लॉइट किया जाए एक खास मुद्दत के बाद। अब जब इंडिविजुअल प्रोविजंस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, मेरा ये स्टैंड है, ये मौक़िफ़ है कि महज कानून बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है जब तक कि आप प्रैक्टिकली जमीनी सतह पर कुछ काम न कर लें ताकि वो कानून जो है कानून का जो मकसद है वो पूरा हो। अब जब मैं अपने जम्मू व कश्मीर की बात कहूंगा, हमारा एक नेशनल पार्क है दाचीगाम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क है, तो उसी के पास ही 6 के करीब सीमेंट फैक्ट्रीज इस वक्त हैं जो पोल्यूटेंट्स, हजारों टन पोल्यूटेंट्स हर साल हवा में डालती हैं, तो जिससे मुतासिर हो रहा है ये नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क ये है, इट इज होम टू द एंडेमिक स्पीशी ऑफ डियर जो हांगुल के नाम से जानी जाती है, वो उसके सारी दुनिया में वो कहीं नहीं पाया जाता है मां सिवाय दाशीगाम नेशनल पार्क के। अब आप कानून तो बना रहे हैं लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि उसकी जो खतरा उसको ला के, कई सब बच्चे हैं, कोई ज्यादा तादाद नहीं है, तो ये जो पोल्यूशन है, एमिशंस है फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो और ज्यादा मुश्किल पर जिससे आप मुझसे इत्फाक करेंगे, एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया में लाइमस्टोन माइनिंग की इजाजत दी जा रही है। एक मैपिंग होनी चाहिए थी ताकि ये लाइमस्टोन माइनिंग एक कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ जो डिजिग्नेटेड है, जो आइडेंटिफाइड है, नोटिफाइड कंजर्वेशन एरिया है, खरीव खोनमू हुयन के इलाके में, उसमें माइनिंग हो रही है। तो महज कानून बनाने से क्या हासिल होगा? इसके अलावा अब बढ़ता हुआ हम जम्मू कश्मीर में हमें सामना है बढ़ते हुए एनिमल बैन, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से कई जानें चली गई, बच्चों की जानें चली गई, बुजुर्गों की जानें चली गई, इस खवातीन की जानें चली गई इस पिछले 2-4-5 महीनों में, क्योंकि जो आपने नहीं बात करनी है, जो आपने जो उनका जो हैबिटेट है आपने उस पर हमला किया है और वो जानवर आबादियों का रुख कर रहे हैं। ये होना चाहिए, आप इसके बारे में भी आपको कोई पॉलिसी मरतब करें। फिर एक और बात है, हमारे इलाके में अवंतीपुरा से खिरवा तक कई एक स्टोन क्वारीज थी जिनको बंद किया गया क्योंकि ये आ रही है उस एरिया में आ रही है कानून की, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन में कोई काम नहीं किया जा रहा। भाई अगर आप कोई कारोबार बंद कर रहे हैं, किसी का रोजगार बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज एक दीजिए ताकि आप एक बैलेंस कीजिए। आप जैसे हमारे लीडर आप बैलेंस कीजिए जो वाइल्ड लाइफ के जो प्रोटेक्शन के कंसर्न्स है उनमें और जो इंटरेस्ट है जो ह्यूमन काइंड का इंटरेस्ट है। एक और अच्छी बात हुई है कि अब हमारा बल रहेगा, हमारा फोकस रहेगा प्रोटेक्शन के बजाय प्रोटेक्शन के साथ साथ कंजर्वेशन पर, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पर। लेकिन ये सब एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। पहले आपके इंटरेस्ट जो है, जो इफेक्टेड लोग हैं उनके एक मिनट बस उनको प्रोटेक्ट कीजिए और साथ ही आप जो पोल्यूशन वगैरह का जो हो रहा है उसका ऑडिट कीजिए। प्लीज कंक्लूड। तो ये एक बैलेंस्ड एक व्यू लीजिए ताकि हर एक चीज का आप कंसर्न जो है वो एड्रेस करें।
वाइल्ड लाइफ का भी और जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी। इसके अलावा जनाब कई सब बस एक मिनट कई सब लोग लगाए एक ही मिनट कई सब लोग वाइल्ड लाइफ के इस वक्त काम कर रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट के सूर्य में, लेकिन उनका जो वेजेस है 1 साल से रेगुलेशन 1 साल से पेंडिंग है। वो कैसे कमिट करेंगे? जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन पर है, कंजर्वेशन पर है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या हिस्सा है, उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और जो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, उनको उनके जो वेतन है, उनका जो सैलरी है और रेगुलेशन तो जनाब मेरा मुतालबा ये होगा 143 पर नजर किया जाए। थैंक यू चेयरमैन। और उसके बाद ये कंसर्न वॉइस की। First of all, I would like to state in this August House that the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 does not consider the ground realities. Therefore, it is against the interest of people residing adjacent to forest. We are all happy to protect our forest and wildlife in its boundary, and I am sure nobody will oppose it. Chairman, as you are aware, wild animals such as elephants, wild boars, poisonous snakes, tigers and cheetahs frequently come out from forest and cause harm to humans and domestic animals. Moreover, these wild animals destroy houses, properties, agricultural lands, and the crops of people. Millions of people in the country who live near forests are the victims of the attack of these wild animals. There is no mechanism to protect human beings, their livelihoods, and domestic animals from the attack of wild animals. Chairman, this amendment also lacks a provision to protect people and domestic animals from wild animals. However, punishment is harsh for people who encounter wild animals, even as part of self-defense. They have to undergo imprisonment for a period of 7 years in such cases. In the threat of a snake attack, in existing law gives us 2 options. Get bitten and died poisonous and painful death, or we can kill the snake for self-defense and leave the better half of our life in jail. Chairman, this is the real situation right now. Nowadays, the wild boars that come out of the forest are entering the villages up to 40 kilometers and are not going back to the forest. They destroy the agricultural crops and kill several farmers in my constituency itself. Kerala is a state that protects 100% of its greenery. At national level, the total area of forest land is 22%, whereas Kerala, the forest land is around 30%. Furthermore, plantations contribute to extending the green canopy. Kerala's forests and plantations cover 53% of its total territory. Thus, the farmers serve as the guardians of greenery in Kerala. However, this bill does not seek to protect the people, especially the farmers in Kerala. The recent order of the Honorable High Court has declared that minimum distance of 1 kilometer of land shall be included as ecologically sensitive zone around the national parks, wildlife and bird sanctuaries in the country. If this order is implemented, which will adversely affect the normal life of common men and farmers in the state of Kerala who are settled within the above limit of land since several decades. 1 minute. It is very sad to say that this judgment with the support of our government of Kerala. Wild animals should leave the forest and do not allow them to come out of the forest. Protect them in the forest. They may not be allowed to enter the villages, which is a threat to human life. I am concluding. Developed country like USA has taken measures to control the wild animals and its growth to protect from its attack. Hence, I request the government to kindly withdraw this bill and replace it with a comprehensive one that has provisions to protect human beings from the attack of wild animals. It also, I would like to take this opportunity to request the government initiate the necessary measures to avoid human wildlife. Thank you, Honourable Chairman, for giving me an opportunity to speak on this very important amendment bill on the Wildlife Protection Amendment Bill of 2022. The Centre has proposed an amendment in the Wildlife Protection Act 1972 to enforce provisions of an international convention to prevent trade in endangered species
but the changes which it intends to introduce in the existing law may by default do more harm than good, as certain experts have flagged how it would allow commercial trade in live elephants and even reduce the protection of certain species such as Asiatic jackal, the striped hyena and the Bengal fox. The bill, which was sent to the Parliamentary Standing Committee for further examination, seeks to amend the existing Act for better implementation of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, the CITES. It proposes to rationalize various schedules of the law to fulfill India's international obligation for the sake of the protection of wild animals, birds and plants. So, on the positive side, it is intended to ensure that the provisions with respect to the Convention are part of the domestic law. Besides, the bill aims to also make the law simple by streamlining the schedules. However, there are certain issues which needs to be addressed. So, the existing Act specifically prohibits the trade in wild animals, including captive and wild elephants, but an exception has been carved out in the bill by excluding live elephants from the general prohibition contained in Section 43. The implication of the same is that the commercial sale and purchase is no longer prohibited under the Act. Clause 27 proposes to permit the commercial trade of elephants, legalizing elephant trade for the first time in 50 years, which is a very dangerous and a regressive move. The section also permits the commercial display of trophies and captive animals and even permits the transfer or transportation of animals, trophies and animal articles. Sir, I humbly request the Honourable Minister to reconsider these sections and not legalize the trade in live elephants. So the bill also has provisions of excessive delegation and unrestricted powers of the central government to declare species as vermin, unlike the existing law. Once a wild animal is declared as vermin, it enjoys no legal protection and has the same status as domestic animals. It can be killed, traded and tamed. Species such as the civets, the common fox, jackal, martens, Andaman wild pig, among others, cannot be declared as vermin under the Act in view of the statutory protection. However, as the bill amends Section 62 by stating that only species listed in Schedule 1 cannot be declared as vermin, while species listed in Schedule 2 can be declared as vermin. Schedule 2 in the bill includes the striped hyena, the Andaman wild pig, the Indian fox, Bengal fox, jungle cat, Asiatic jackal, among other species, which, if declared as vermin, can pose serious threat to their existence in the wild. So we live at a time where we are threatened by climate change and ecological devastations, and it is a time where more species must be included in the first schedule. Instead, the opposite might happen, and it will endanger so many species, sir. So I request the Minister to again reconsider this particular provision. Please conclude. Sir, just one last point. There are also apprehensions that the State Board for Wildlife would be rendered defunct by the proposed amendment. It is said that the bill intends to replicate the model of the National Board of Wildlife and its standing committee. It is pertinent to point out here that the National Board for Wildlife, headed by our Honourable Prime Minister, has not met since 2014. At present, the State Board, by virtue of their composition, are still able to speak in the interest of wildlife. This will no longer be the case if the Standing Committee, once the Standing Committee of the Board is constituted. Please conclude. So, on the positive note, I would like to say that there is one amendment which talks about better management of protected areas, and this is a very welcoming, amendment. And I hope that it includes the elephant corridors, because my state of Meghalaya has several elephant corridors which are not yet mapped. And I hope that when you are saying that the amendment will improve the management of protected areas, it would
include better mapping of corridors and better management so that the human, animal conflicts that take place are also drastically reduced. With these few words, I would conclude my speech. Thank you. Navneet Rana. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021. सर, आपको ये बताना चाहूंगे अध्यक्ष जी, आज गांव और शहर में घने जंगल क्षेत्र को काटकर बसे जा रहे हैं, जिसके कारण जंगल प्रभावित हो रहा है. जंगली प्राणी का क्षेत्र कम होते जा रहा है. महाराष्ट्र राज्य में मेलघाट सबसे बड़ा घने जंगल क्षेत्र है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र अमरावती में एक भाग है, तथा गढ़चिरौली, यवतमाल, चंद्रपुर ये सभी टाइगर रिजर्व एरियाज हैं. मेलघाट परिसर में जो टाइगर रिजर्व एरिया है, आदिवासी छोटे छोटे गांवों में एक बड़ी आबादी रहती है. खेतीबाड़ी का काम करके वो जंगल में ही अपने परिवार के साथ रहती है, पालन पोषण करती है. अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये विनंती है कि जल्द से जल्द उल्लेखित आदिवासी गांव जो मेलघाट टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर आता है, उन्हें पुनर्वसन किया जाए, क्योंकि जंगल परिसर के अंदर जो गांव आते हैं उन्हें किया जाए तो वहां के वन्य प्राणियों को भी सुरक्षा मिल पाएगी. गांव के लोग पर भी जो लगातार शेर, भालू, चीते हमले करते हैं, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है. उस पर भी रोक लगेगी तथा मनुष्य और वन प्राणियों की सुरक्षा भी होगी. सर, मैं एक विनंती और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी करना चाहूंगी. जो भी पुनर्वसन ये करते हैं, पुनर्वसन के लिए गांव को अपील करते हैं कि ये यहाँ से हट जाना चाहिए, ये वाइल्ड रिजर्व एरिया में आता है, टाइगर रिजर्व एरिया में, उन्हें सिर्फ सर 10 लाख रुपया दिया जाता है. आज के पीरियड में 10 लाख रुपए में अगर वो पुनर्वसन करते हैं तो शहरों में जाकर वो 10 लाख रुपए में क्या करेंगे. तो मैं विनंती करूंगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपया किया जाए, जिससे वो अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पे जाकर अपना घर बनाया जाए, जहां पे वो आराम से रह सके. अध्यक्ष जी, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के वेरिएंट भी कम हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है. इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. जंगल को लिए खेती जो किसान भी खेतीबाड़ी करते हैं, उन्हें जंगली वाइल्ड एनिमल से बचाना भी सरकार को ध्यान देना चाहिए. सर, मैं एक और विनंती करूंगी. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हम जो ये बिल ला रहे हैं, और 1972 में सितंबर में इसका इम्प्लीमेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसमें लाए गए. सर, पर आज वाइल्ड एनिमल के कारण जितने भी खेत होते हैं, उसके आजू बाजू जंगल परिसर होते हैं, पूरे के पूरे खेत रात में वाइल्ड एनिमल्स पूरा नष्ट कर दिया जाता है. और उसके द्वारा जितना नुकसान हमारे किसानों को, किसान भाइयों को होता है, उसकी मदद कौन करेगा. ठीक है, हम मानते हैं वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए, वी सपोर्ट दिस बिल, पर उसके साथ साथ में जो जंगली परिसरों के बाजू में किसान लोग, मेरे भाई बहन रहते हैं, जो खेती करते हैं, उन्हें बचाने का भी प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट में लाना चाहिए. ऐसी मैं हमारे डिपार्टमेंट से मांग करती हूँ. अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि अंजनगांव बारी, सर 1 मिनट प्लीज सर, अंजनगांव बारी, गोविंदपुर, भानखेड़ा, वडाली, चांदूर रेलवे, चिकलदारा, अंजनगांव सुरजी, दरियापुर और परतवाड़ा, ये सभी क्षेत्रों में इस तरीके की समस्या हमारे किसान भाइयों को होती है. सर, लास्ट 1 मिनट सर. अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र सहित देश के अंदर सभी जगहों पर जंगलों से रास्ते होकर गुजरते हैं. रास्तों में भी दोनों साइड फेंसिंग करानी चाहिए, क्योंकि जंगली पशु कई बार सड़क पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है. सर, और उससे ज्यादा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी. जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर मिनिमम 45 to 80 डिग्री धूप होती है, और जहां पर पानी की समस्या से सभी वाइल्ड प्राणी गांव में एंट्री करते हैं, रोड पे आते हैं, उससे दुर्घटना उनकी भी होती है. और जो फॉरेस्ट में रहते हैं भाई बहन हमारे आदिवासी, उनके जानों को भी धोखा होता है. तो मेरी आपसे ये मांग है सर, उनका पुनर्वसन भी होना चाहिए और ये जंगलों की संरक्षण भी होना चाहिए. हम तो जीते किसके लिए हैं सर? जो बिल लाया गया है, जल, जंगल, जमीन और जीव, इसी चीजों के लिए आज हम ये बिल लाया गया है. तो मैं आपको इतना ही बोलूंगी, जो भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, उनका साथ देना चाहिए. उसका थैंक यू. सुरेश पुजारी. Thank you, Chairperson, sir, for giving me the permission to speak on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Sir, I will be speaking in support of the bill. This is a much awaited bill, sir, as most of the provisions
of the earlier act had become ineffective and redundant under the premises that the crime against wild animal in India and particularly in Orissa is on the rise. The crime against wild animal are manifold, sir, in our society. Every now and then, the number of wild animals in our country is getting reduced primarily because of 4 reasons, sir. The most shocking amongst all the reasons is poaching and poisoning, including death due to electrocution and run over by train in India. Therefore, we need a comprehensive set of rules and regulations with biting teeth, sir, to protect the wild animal in India. In addition, we need to set up more national parks and wildlife sanctuary across the country. In my constituency also, sir, there is a wildlife sanctuary called Debrigad Wildlife Sanctuary covering an area of 346 square kilometers. I request the Honorable Minister, sir, to ensure that there is improvement in the Debrigad Wild Sanctuary. And talking about the crime against animals, sir, recently on 25th of July, as reported in Times of India, a half-burnt bone of an elephant were recovered by the State Task Force team of the Crime Branch, Odisha, in Sambalpur, sir. And the Forest Division of Dhama Forest Range, it was found. As briefed by the media, by the DIG, the big pieces of bone were recovered from the forest near Kolaga. Ashes were recovered from another village, Tabla Bahal. And again, before that, on January 21st, Your Honor, an elephant died due to bullet injury. Under the Sambalpur division, as reported again in Times of India, in which, before its death, the jumbo remained struck in a pond in Sampalhara village for 5 long days. The postmortem report conducted revealed that the animal had suffered from multiple organ failure caused by infection, followed by bullet injury. Again, in Odisha has been witnessing steep rise in the instances of crime against wild animals, which is evident from the seizure of a leopard skin by the State Task Force at Bologad in Khurda district, which is very near to Bhubaneswar, the capital of Odisha. On 18th of January 2022, the Hindu reported that the State Task Force had seized 4 leopard skin with, please, sir, you are a very kind-hearted person, sir. Please, I will conclude. So the crime against the wild animal in Odisha is also on the rise. It is needless to mention here that in the special drive launched in 2020, sir, by the State Task Force, 25 leopard skin were seized, 13 elephant tusks were seized, 7 deer skin was seized, 9 live pangolins were also seized. So the crime is increasing day by day. In this connection, my being a lawyer, sir, you are also a lawyer. Being a lawyer, I am concerned. I am concerned because the conviction rate. But be brief. I know you are a lawyer. I will be very brief. In 1 minute, I will conclude, sir. Please. Being a lawyer, I have also conducted many cases. The crime rate is increasing and the conviction rate is decreasing day by day. Because of lack of training by the forest official, because of lack of training by the police officials, because of lack of use of technology, etc. As a result of which the crime rate against the wild animals is decreasing day by day. So my appeal to the Honorable Minister of Forest is that proper training should be imparted to the police official and the forest official. Technology should be used as evidence, as because an animal cannot give evidence against another animal like human beings. So they do not have witnesses unless the technology used. And simultaneously, I am concluding, sir. Finally, sir, can we not change the evidence that in the event of possession of any skin or anything from the house of a person,
Cannot we shift the onus of proof to the accused person instead of holding it with the prosecution? With this, sir, I welcome this bill, and this is a landmark bill, and this will help in protection of wildlife in the entire country. Thank you, sir. Thank you. Thomas? Who? You will be called. You will be called. You will be called, please. Better. Thank you, sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Be brief, 3 minutes, please. Sir, I will conclude within 3 minutes. Yes. Sir, the bill was introduced with many significant changes to which the Standing Committee has done a very good job for making it better. The Standing Committee lays down a decent overlay to implement the Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and also for the protection of the native Indian gene pool. It has also rightly pointed out the issue of rationalizing the schedules, which should be looked upon by the government and should be thoroughly revised. The creation of a state board for wildlife is also a welcome step, but the constitution of the board should be balanced and concerned to the agenda of the committee. Sir, I have to mention a matter which has already been mentioned by many of the members here. It is the human-animal conflict in Kerala. Not only in Kerala, but all parts of the country. Sir, the suggested measures are not sufficient to settle the issue of human-animal conflict that has to be settled. Because the population of the animal has multiplied to such an extent that they cannot live within the forest limits. They come out of the forest, they attack the settlements, they attack the farmers, they attack the farms, and during the last 10 years, more than 1,300 farmers were killed because of this. And it is, of course, very good that we should protect the animal, especially the wild animals. But as per the Constitution, Article 21, it is the right to life for every Indian. And that has to be protected also. While protecting the animals, we have to protect the life of the human beings also. And my humble request to the Honourable Minister is to bring out some legislation so that the life of the farmers and the human beings are also protected, for which the entire Kerala is demanding. All the members from Kerala who have made a speech here have mentioned about this problem in Kerala. So my humble request is that Honourable Minister will take into consideration. Sir, only one or two sentences only. Sir, the government of Kerala has requested you in person that the wild boar should be declared as vermin, but no decision has yet been come out from government of India. The population of wild boar is multiplying in such an extent that it is, as was mentioned earlier, they are coming out of the forest more than 40-50 kilometers away from the forest, and they attack the farmers, they attack the farms. So wild boar should be declared as this point has been mentioned so many members. Now, only one sentence more. Sir, say regarding the Supreme Court decision on the buffer zone, the government of Kerala has already requested the government of India that government should put forward before the Supreme Court a affidavit wherein the settlements and farmlands will be excluded from the buffer zone. I would request the government to take up that matter. அவை தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த மசோதா வன உயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக திருத்தம் செய்யப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
வனத்தை பாதுகாப்பதிலும் வனத்தில் வாழ்கிற பூர்வீக குடிகளை பாதுகாப்பதிலும் அரசு போதிய கவனம் செலுத்துகிறதா என்கிற கேள்வி எழுகிறது. மொத்த நிலப்பரப்பில் 33 விழுக்காடு வனத்திற்காக இருக்க வேண்டும் என்று சட்டம் இருந்தாலும் எல்லா மாநிலங்களிலும் 33 விழுக்காடு வனம் இல்லை என்பதுதான் வேதனைக்குரியதாக இருக்கிறது. இதுவே விலங்குகள் மனிதர்களை தாக்குவதற்கு ஒரு காரணமாகவும் இருக்கிறது. மனிதர்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் சிறுத்தை புகுந்தது, யானை புகுந்தது, சிங்கம் நுழைந்தது என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். அதற்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுவது 33 விழுக்காடு அளவுக்கு வனப்பரப்பு இருக்க வேண்டும், அவ்வாறு இல்லை என்பதுதான். வன உயிர்கள் வாழ வேண்டிய இடங்களில் நாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்வதுதான் காரணம் என்பது வல்லுநர்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கிற உண்மையாகும். கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் இன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷஸ் என்னும் சர்வதேச மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை இந்த சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. இந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிற திருத்தங்கள் மிகுந்த வலியை தருவதாக இருக்கிறது, வேதனையை தருவதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக யானைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த யானைகளை விற்கவும் வாங்கவும் இந்த திருத்தம் இடம் கொடுக்கிறது. வணிக நோக்கில் யானைகளை விற்கவும் வாங்கவும் அனுமதிக்கிறது என்று சொன்னால் யானைகளை எப்படி பாதுகாக்க முடியும்? 2012 எடுக்கப்பட்ட புள்ளிவிவரப்படி இந்தியாவில் 60,000 யானைகள் இருந்தன, 30,000 யானைகள் இருந்தன. ஆசியாவிலேயே இந்தியாவில் தான் 60% யானைகள், அதில் தென்னிந்தியாவில் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன. ஆனால் 2017 எடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரத்தின்படி பார்க்கிற போது அது 27,000 யானைகளாக குறைந்திருக்கின்றன. 3,000 யானைகள் நாம் இழந்திருக்கிறோம். அவை மின்வேலிகளில் சிக்குவதால், ரயிலில் அடிபடுவதால் உயிரிழக்கின்றன என்பதையும் கடந்து தந்தத்தை எடுப்பதற்காக வேட்டையாடுகிறவர்கள் யானைகளை கொல்லுகிறார்கள். எனவே யானைகளை கொல்லுகிற நிலை இங்கு அதிகரித்திருக்கிற சூழலில் யானைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு யானைகளை வணிக நோக்கில் வாங்கவும் விற்கவும் அனுமதிப்பது என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. எனவே இந்த பிரிவு நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். இன்னொரு திருத்தம் இந்த மசோதாவில் செய்யப்பட வேண்டும். இதுவரையில் மாநில அளவிலான கமிட்டிகள் அமைக்கப்பட்டால் அதிலே வன உயிர்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பணியாற்றக்கூடிய தன்னார்வ நிறுவனங்களை சார்ந்தவர்கள், வன உயிர் ஆர்வலர்கள் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் இப்போது அரசு அலுவலர்கள் மட்டும்தான் அதிலே நியமிக்கப்படும் என்கிற நிலையை இந்த மசோதா உருவாக்கி இருக்கிறது. நமது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு வன உயிர் ஆர்வலர்களை உறுப்பினர்களாக நியமிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்திருக்கிற நிலையில் அவர்களை இந்த மசோதாவை திருத்தம் செய்து யானைகளை விற்கவும் வாங்கவும் அனுமதிக்கிற பிரிவு நீக்கப்பட வேண்டும். மாநில அளவில் அமைக்கப்படுகிற கமிட்டிகளில் வன உயிர் ஆர்வலர்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே இதை திரும்ப பெற்று அந்த திருத்தங்களை செய்து மீண்டும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். The wildlife protection. Honorable member, you are having only 2 minutes. You have to confine yourself 2 minutes because so many members. Thank you very much, sir. सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जितना सीरियसनेस से ये अमेंडमेंट लाना चाहिए था उतना सीरियसनेस नहीं है। और मेरा कुछ सुझाव है, चूंकि आपने बताया 2 ही 3 मिनट है, मेरा सुझाव ये है जो एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग का मसला है इसको बिल्कुल बंद किया जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल है असम डिब्रू साइक्योआ का 2 साल कबल ऑयल इंडिया वहां एक्सप्लोर करती है और वहां ब्लो आउट फ्लेम की वजह से पूरा वहां का इकोसिस्टम बर्बाद हो गया और क्रूड ऑयल के स्पिल से वो अभी तक उभर नहीं पाया है। उसी तरह सर मैं एक पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, जो वाइल्ड लाइफ में सेंचुरीज है, जो लगभग 1000 प्रोटेक्टेड एरियाज है, वहां पे जो गार्ड्स हैं उनको पुलिस के स्तर पे उनको पावर देना चाहिए और इक्विपमेंट देना चाहिए और फैसिलिटीज देना चाहिए। क्योंकि वहां से धड़ल्ले से पोचिंग होती है और फॉरेस्ट में जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी भी चोरियां होती है। तो इसको रोकने के लिए मेरा सुझाव है। दूसरा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग $120 बिलियन आज से 5 साल पहले
ग्लोबल जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन था और लगभग 22 मिलियन लोग उससे जॉब सीख करते थे। और हमारे हिंदुस्तान में भी 15% के रफ्तार पे हर साल बढ़ता जा रहा है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और हर कमिटी में वहाँ के ट्राइबल्स और जो जानकार एनवायरमेंटलिस्ट है, नेचुरलिस्ट है, उनको कमिटी में साइंटिस्ट को रखना चाहिए। इसके अलावा जो एनजीओस काम करते हैं और जो बिजनेस है, कहीं पे अगर होटल्स के लोग बिजनेस करते हैं, उनको भी उस कमिटी में रखना चाहिए। सर, 1 more मिनट, मेरा 1 मिनट है। कहीं एक लॉ बना है कि 80% जो फॉरेस्ट है वो बंद रहेगा। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई जंगलों में नक्सलाइट इन्फेस्टेड एरिया हो गया और वहां धड़ल्ले से टाइगर्स तक की पोचिंग हो रही है। एक गवर्नमेंट आंकड़े के तहत 100 से ज्यादा टाइगर्स मिसिंग है। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कोई भी एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन रेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए। और लास्ट सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिहार में सबसे कम फॉरेस्ट है और उस बिहार में सबसे कम हमारे एरिया में फॉरेस्ट है। इसलिए एक वहां पे छिछोरा झार जंगल है और कुछ झील्स हैं, जिसमें कचूदा झील है, मारामांदी झील है। मैं आग्रह करना चाहता हूं मिनिस्टर से कि इसको भी डेवलप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। श्री सिमरनजीत सिंह मान। Thank you. We're having only 2 minutes. Give me 1.5 minutes, Mr. Chairman. Good. Thank you for your goodness. I want to bring to the notice of the Honourable Minister and the government that we are not doing anything to preserve certain species like the household sparrow, the vultures, and the bustards. What are we going to do to preserve these common birds and species? Secondly, sir, there is a conflict between man and the forests. Our tribals live in the forests, but we are sending in more mines and exploiting the jungles. With the result, the tribals are suffering and their way of life has been disturbed. If it has been disturbed, they are being dubbed by the government as Naxalites or Maoists, and calling them Maoists and Naxalites, they are being shot dead in extra murders, judicial murders. The Maharaja of Bastar, who was fighting for the tribals, was also shot dead by the security forces. We want to know the cause. Why are the tribals being dubbed as Naxalites and Maoists and being shot? And will the minister restrict mining of minerals in these forests? And these tribals, they are worshippers of nature, and they are being converted to certain religions which is against the ethos of our religion in India. Now the government is also introducing the cheetah in Madhya Pradesh. But the sanctuary which they have chosen, experts say that is too small for the cheetah to survive. We'd like the minister to tell us something about this. And the last thing is, sir, that in this parliament I've observed Rajya Sabha and the Lok Sabha that amongst the staff and the officials, the Sikh species has disappeared. There is no one in the staff and in the officialdom. The Sikh species are disappearing. Will the government do something about that? Or will the Miss Madhavi? Or will the... Thank you, Chairman, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on the bill, Wildlife Amendment Bill 2021.
Sir, on behalf of YSR Congress Party, I would like to appreciate the government efforts for the implementation of the sites. Sir, the bill aims to implement the Convention on International Trade in Endangered Species, an international agreement that regulates the international trade of wild animals, plants, in order to prevent any threat to their extinction of the species. The bill will provide for the designation of a management authority which grants the export or import permits for the trade of specimens, and significant authority which gives advice and accepts related to the impact on the survival of the specimens being traded, thus bringing us under the global agreement, and is therefore a welcoming provision. Sir, I would like to take opportunity to highlight some of the successful efforts undertaken by the state of government towards the wildlife conservation. Sir, Andhra Pradesh wildlife conservation efforts, tiger number on the rise. The tiger number on the state have seen a 60% rise from 47 in the year 2018 to 75 in 2022, with 64 in the Nagarjuna Sagar Srisailam Tiger Reserve and 9 in Seshachalam corridor and 2 in Papikondalu. Through the process of tracking sensors with a more scientific method, employed drones and cameras. Sir, we are all proud to have a country's largest tiger reserve NSTR in Andhra Pradesh, spread over 3,727 square kilometers, sir. Also, we have first backbuck survey. In the Andhra Pradesh State Wildlife Department has started a first ever survey for backbuck along a stretch of islands in the Godavari between Dawleswaram and Yanam, with the goal of drawing up a convention plan to protect the endangered species. Sir, also we have nodal officers of the animals. Sir, in Vijayawada, to prevent the cases of pertaining to cruelty against the animals, the entire district police have appointed a circular inspector as the nodal officer to protect the animals. People may contact the officer and register the complaint against the cruelty of animals in cases of other cases of smuggling, sir. So I would like to conclude by expression our parties to support for the bill, sir. Thank you for giving me the opportunity, sir. Thank you. Sri Savitri Rai, Professor. Sir, I rise to speak on this Wildlife Protection Amendment Bill. The bill has already gone to the Standing Committee and the report was submitted in April this year. This is a very comprehensive omnibus bill, almost 150 pages. I do not know if this bill could be subsumed into the Biodiversity Act. It would have been better, because in one bill we could have covered the whole problem of biodiversity. Why two bills are there, I am not sure. The bill seeks to create a management authority and a scientific authority. My fear is that two more top-heavy organizations are being made. In our country, for anything, we make a new organization and then we appoint certain people are favored, but actually the problem is not solved. I would submit to you, through you, to the Minister, sir, that this is not the way to protect wildlife. We have the Arabari model, which is taught to environment students all over the world in West Bengal, where an ideal villagers and forest officers committee is formed that has helped in preventing felling of trees and also damage to the human habitation. Now, sir, I seek the protection of the minister, because in our state, the problem is not that men are killing animals. In other states, there are, yes, problems. There was one Sangsad Chand who made the whole Sariska forest without any tiger. Whole tiger population was killed off. There are similar Sangsad Chands. There was earlier Virappan in Karnataka, who killed off so many elephants for their tusks. We in West Bengal are under attack. Pratibha Mandal is here.
In her constituency, every year, 50 to 100 people are injured and at least 10 people killed by man-eating tigers in the Sundarbans. Previously also I mentioned about the Sundarbans, but the government has not announced any comprehensive policy on the last mangrove forest of the century. This is destruction of mangroves will lead to storms and will ultimately touch the city of Calcutta. One needs to read Amitabh Ghosh to understand what is happening in the Sundarban Biosphere Reserve. Sir, today I must thank, in retrospect, Mrs. Indira Gandhi. She was the first who conceived of the Project Tiger, and because of her, the tiger got saved. I must also remember Selim Ali, the ornithologist, who gave Indian birds a definition. But saying all this, I want to ask the minister directly that what is he doing to prevent people from being killed by man-eating tigers in the Sundarbans. Also, we have something last one. Sir, you are from Uti, and you know in Muduvalai, all these elephants are going around. If you go on the road from Uti to Mysore, on the way you see so many elephants. But in your state, I don't know how much damage they do. In West Bengal, they descend from the Dalma Hills near Jamshedpur. Every year they are entering habitation area. And once they get some alcohol, mohua, which is kept by tribals, they go mad and destroy property, kill human. Similarly, in North Bengal, in Alipurduar Duars region, every year they invade the houses of tea garden laborers. They also drink mohua there and they kill people. So what is the minister's reply? How to protect human beings from wild animals in West Bengal? Because they are also being killed by railways. 2 ministries, engines are ramming directly into herd of elephants. Elephants follow the same route year after year. But the government has not announced any comprehensive the railway menace which kills elephants. With that, sir, I'll... Mr. Gill. धन्यवाद चेयरमैन सर, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया। जंगली जीव और जंगल हमारे देश की धरोहर है, इसको संभालना, इसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। सर, मैं ज्यादा इस बिल पे नहीं जाऊंगा, मेरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो मैं मंत्री जी को देना चाहता हूं, वो देके मैं बैठ जाऊंगा। सर, हमारे रामसर साइट्स हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे वीड्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमारे देश के नेटिव पौधे नहीं है। जैसे अमेरिकन एक वीड है और एक ग्रास है, मैक्सिकन ग्रास। इन्होंने पंजाब में कोई ऐसा जल स्रोत नहीं बचा जिसको इन्होंने प्रभावित नहीं किया। आज मेरे को ऐसा लगता है कि उनको इससे साफ करना नामुमकिन होता जा रहा है। ऐसे जो पौधे जो बाहर से आते हैं, इनको रोकने का हमें कुछ ना कुछ इसका कोई इंतजाम करना चाहिए। सर, एक हम बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग के लिए, एक पहली दुनिया की रिफाइनरी असम में लग रही है। सर, उस रिफाइनरी के लिए हमें 2 लाख टन बांस की जरूरत पड़ेगी, मगर मेरा एक निवेदन है कि जितना भी बांस के जंगल है वो खत्म हो जाएंगे। कृपा करके अब से ही शुरू करिए कि इस बांस को बढ़ाया जाए। सर, दूसरा, किसी भी स्टेट हो या अपना ये सेंटर हो, सभी के पास फंड्स का अभाव है और बहुत कम फंड है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रखा गया है। सर, हमारे गार्ड्स की कमी है जिसके साथ पोचिंग होती है। सर, मेरा एक बेनती है मंत्री जी से कि हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, एनसीसी है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है। सर, 2 मिनट, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए पैशनेट। माननीय
सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरा स्टेट मध्य प्रदेश गौरवशाली है कि टाइगर स्टेट कहलाता है और मेरा स्टेट जो है वो टाइगर स्टेट है। पेंच, कान्हा 12 से ज्यादा हमारे पास यहाँ पर टाइगर के स्टेट्स हैं। बी ब्रीफ, ओनली 2 minutes, प्लीज ब्रीफ। ओके, बी ब्रीफ सर। सभापति महोदय, अभी 29 तारीख को वैश्विक बाघ उत्सव मनाया गया है और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, हमको इस बात का गौरव है और हमारे यहाँ पर बाघों की संख्या काफी है। सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रकृति और वन्य जीवों के लोगों में ज्यादा ज्ञान हो, इसलिए हमने अपने स्टेट में, और खास करके मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने अपने स्टेट में जब मैं मंत्री था तो मोगली उत्सव हमने प्रारंभ किया ताकि बच्चों के बीच में वन्य प्राणी और प्रकृति के बीच में कैसे सामंजस्य हो, कैसा उसका ज्ञान मिले। एक उत्सव भी हमने बच्चों के लिए अध्ययन का क्विज भी कराते हैं और उनका उत्सव भी 4-5 दिन का हम अपने नेशनल पार्क पेंच में कराते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से साइटिस के अंतर्गत हमारे देश की स्थिति क्या है। संधि नहीं होने के कारण से अभी हम दूसरे दर्जे पे हैं। इस नियम के पारित होने से हमारे यहाँ पर जो अभी जिस तरह हमारा निर्यात नहीं हो पा रहा है, केवल अभी हम केवल 200 प्रजातियों का निर्यात करते हैं, 600 प्रजातियों का आयात करते हैं और लगभग 38,700 से ऊपर प्रजातियां हैं और जो इसके अंतर्गत आएंगी जिसका भारत को लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, अभी जिस तरह हमारे एक वक्ता ने कहा कि बेशरम और दूसरा के ऐसे पौधे जिनके कारण से हमारे ऐसे गाजर घास जिनके कारण से इस नियम में एक लाभ मिलेगा कि जो हमारे विदेशी जो प्रजातियां जो हमको नुकसान करती हैं उनको भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन होगा और इसके कारण से हमारे जो नए क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाएंगे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उनको अवसर। सभापति महोदय, मैं 1-2-3 सुझाव अपने देना चाहता हूँ। मेरा बहुत आखिरी में नाम लिया, मैंने बहुत पहले कहा था। तो इसमें स्थायी समिति भी बनेगी जिसके कारण से जो अभी जहाँ पर नए अभ्यारण्य या नए बनाए जाने हैं तो वहाँ पर हमारे सीएम को और पीएम की बजाय हमारे सभापति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में हमारे वन मंत्री होंगे, जिसके कारण हमको नए अभ्यारण्य बनाने या सेंचुरी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मैं एक सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ सभापति महोदय कि अभी जिस तरह से हमने सद्भाव के अंतर्गत हमको पशुओं की चराई और गृह बनाने के लिए पेयजल की सुविधा कही है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसी धारा के अंतर्गत हमको रेत की निकासी भी लोगों को जो हमारे बफर जोन के अंतर्गत हैं उनको रेत की निकासी का अधिकार भी इसमें दे दें ताकि अपने मकान बनाने में उनको सुविधा मिल सके। सभापति, मन में 1-2-3 दे रहा हूँ। शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऐसा टास्क फोर्स बनाया जाए, ऐसा गुप्तचर तंत्र तैयार किया जाए जिसमें उनको कोई जमात न मिले, जंगल में आने वाले लोगों को सख्ती के साथ रोका जाए। और हमारे सभापति महोदय, thank you for giving me opportunity to participate in this discussion. We know life of wild animal and protection of nature is inevitable to preserve human life on the earth. Even the bill aims at the protection of wildlife. There should be addressed the issue related to human beings also. The conflict between wild animal and people is very common in my constituency, and it is unfortunate that several people lost their life in wild animal attack. I point out here, when we introduce such amendment, the protection and measures for the safety of human beings also discussed and included. And I request here the plea of farmers from Kerala. For several years that wild boar should be declared as vermin. Recently, tiger and leopard are creating problems in several villages, including in my constituency. So while we strengthen law to protect wildlife, we have to consider inhabitants of remote areas and also implement measures to save human life in such villages. While we introduce this bill, the compensation to victims of wild animal attack also discussed and included. Several people died and seriously wounded in wild animal attack. Wild boars were causing extensive damage to crops of farmers in hillside. All this should be addressed while we introduce this bill. I request here to include measures to address conflict between wild animal and compensation for wild animal attack in this amendment bill.
and clear-cut provision should be included to solve the conflict between human beings and wild animals. Thank you, sir. Thank you. Shri Adhir Ranjan Chaudhary. Sir, sir, I rise to subscribe the view enshrined in the Wildlife Protection Bill 2022, Wildlife Protection Amendment Bill 2021. Sir, verily the legislative documents has defined 6 clear objectives in order to comply the international agreement so as that our domestic legislation could be complied with that commitment. Sir, in order to ensure international trade in wildlife is legal, sustainable and traceable by implementing the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Second objective is protection of native Indian gene pool, improved management of protected areas, improved care for seized and surrendered wild animals, ensuring deterrence by enhancing fines, rationalization of schedules to the maximum act. Sir, yes, India is a treasure trove of wildlife species, both in plants, animals, etc. Sir, India consists 2.4% of world area, but 8.8% of all the recorded species we are having in our country, including 91,000 animal species, 45,000 plant species, 4 biodiversity hotspots, in addition to hundreds of natural parks and wildlife sanctuaries. Sir, even our Constitution has recognized the sanctity of the animal life, and it has suggested that all sorts of dignity should be provided to the wildlife protection of our country. Sir, in spite of all, I would like to put a few suggestions and also a little criticism insofar as the legislation is concerned. As the environmentalists have raised some apprehension and concern on this legislation. First of all, the bill should have been opened for more time in order to garner the public views and criticism, which meant that this suggestion could have enriched the legislative document further. But this legislation has not given the ample opportunity to the common people of our country, and especially the civil society. This kind of concern has been raised by the civil society itself. Sir, there is another apprehension that has been depicted by those environmentalists that the environmentalist community is perplexed as to why this reorganization is taking place and on what basis the specific amendment has been introduced. Reorganization means lack of clarity over schedule reorganization. The government must clarify the criteria and protocols adopted. The government needs to adopt a transparent and scientific criteria, such as the IUCN Red List, which adopts criteria such as species distribution, population size, trends in population, habitat status, and threats. Public consultations are also required to ensure scientific and transparent omission and inclusion to the new schedule. I do not know how much R&D government has been expending on the wildlife protection of our country. However, it's a very potential area that needs to be exploited by our talented population. I do not know how many meetings are being held by the National Board for Wildlife, where our Prime Minister is happened to be the chairman. Sir, again, insofar as animals is declared as vermin in this bill, to that point, it has been suggested that the bill may endanger 41 species of mammals, 864 birds,
17 reptiles and amphibians, and 58 insects. This in turn may lead to ecological imbalance and impact local food chains. Experts have also recommended the need for a well-established scientific process for listing and delisting species, as well as the need to specify permitted management measures rather than just direct lethal control. Sir, again, on the issue of alien species can not only threaten biological diversity of the ecosystem, but also have a large impact on human health, food security, and economic growth also. Sir, again, on Section 29 for use of water in sanctuaries, here I would like to highlight that the bill proposes that bona fide use of drinking and household water by local communities until they are settled shall not be deemed to be an act prohibited under this section. However, the definition of such bona fide use must be clearly laid down, ideally by the management plan to the respective sanctuary. Sir, so far as Sundarban is concerned, our Honorable colleague Sogat Raiji also highlighting the issue of Sundarban. Before that, I would like to draw the attention of Honorable Minister. देखिए, हमारे देश में सिर्फ नहीं सारे दुनिया में पहले तो ड्रग के बाद आर्म्स के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा क्रिमिनल इंडस्ट्री है। और इसमें ज्यादातर मैरीटाइम रूट से, मतलब समुद्री की रास्ते से ये इलीगल ट्रेड होते हैं। आपके पास क्या जरिया है ये इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, ये थोड़ा हमें बताइए। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जितने बड़े देश है हमारा, ये जो लेजिस्लेशन लाते हैं आप, मुझे शंका है कि ये हमारे लिए काफी होगा या नहीं, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड वाइडर डायमेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। सर, जब तक सुंदरबन की सवाल है, सुंदरबन में ये मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए सुंदरबन सारे दुनिया में जाना जाता है। सिर्फ सुंदरबन से बंगाल में नहीं और हिंदुस्तान में नहीं, सुंदरबन की 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में है। और ये सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम दो किस्म के इसके ऊपर हानि होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होते हैं, दूसरी तरफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो आपके वहां जो दो किस्म के कानून हैं, मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया, उसको देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इनहेबिटेंट जहां आम लोग की आबादी है वो देखने के लिए सुबह की सरकार की वहां दायित्व है। तो इसमें क्या कोई टकराव होते हैं? आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होते हैं? और दूसरी बात है कि आप ये वर्ल्ड हेरिटेज सुंदरबन को ये इन डेंजर बताया जाता है, खतरा पैदा होते बताए जाते हैं। तो इसमें IUCN आपको क्या निर्देश दिए हैं? क्योंकि सुंदरबन 2/3 बांग्लादेश में और हुआ रामफल में एक कोल फायर्ड प्लांट भी बन रहे हैं। तो इस विषय को लेकर क्या बांग्लादेश सरकार से आप लोगों को कोई बातचीत होता है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ रही है, उनके साथ की बातचीत होने की कोई संभावना है? सर, इसलिए बंगाल में एक तरफ मैनीटर, आप जानते हैं बंगाल में सुंदरबन में बाघ जब मैनीटर के चलते हुआ सर सुंदरबन विडोज कॉलोनी बन चुके हैं। हजारों की तादाद में विडोज हुआ अपने जिंदगी को और सारे समस्या को झेलते हैं, सरकार किसी को देखभाल नहीं करते। और इसके साथ साथ हमारे बंगाल के हिल्सा, वो आप खतरे की हालत में गुजर रहे हैं। हिल्सा फिश, एम्फीबियन रेप्टाइल, वो तो अलग बात है। हिल्सा जो हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछली है, उनका भी खतरा पैदा होते जा रहा है। तो इसलिए सर सुंदरबन की रखरखाव करने के लिए आपको ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बात आप करिए, मैं इस समर्थन। Thank you, sir. I rise in support of the Wildlife Protection Amendment Bill 2021. It is an exhaustive bill with many huge improvements, and the scope of the bill has been enhanced. So have the penal provisions, which are a welcome aspect of the bill. Sir, I'll just give a few points. For Odisha, I want to say we have to increase the number of national parks. I'm requesting the Honourable Minister. In my constituency, there's Harishankar and Narsingnath, which is home to millions of species of fauna.
And especially today when our government and the Honorable Prime Minister, promoting Ayush and the alternative system of medicine, this would be a very precious treasure trove for us. Another issue which I want to... Honourable Member, 1 minute. 6 o'clock. Another point which I want to mention here, sir, there is no mention of forest fires in this wildlife protection bill. And forest fires are a great menace and a constant occurrence. Last year, Simlipal, our national park, was burning for days and days, and about 15,000 trees got burnt. A forest guard died, and there was no way to control that fire, which I support what the Honourable MP Suresh Pujari ji said, that this is largely due to lack of staff training and lack of modern technology like drones and things. We really need to put this in, sir. And under national parks, it's mentioned here, no human activity is allowed. But the truth of the matter is that... एक मिनट ना, आप बोलना फिर 1 सेकंड बाद 1 सेकंड। माननीय सदस्यगणों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई इस विधेयक की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। Honorable Member, continues. So, sir, I was saying that no human activity is allowed is given under the national parks. But the truth of the matter is that the villagers and especially the tribal populace which lives there sets fire to a limited area. माननीय सदस्यगण, and then it is absolutely uncontrollable. माननीय सदस्यगण, to go and collect the local forest produce. Sir, my one request is that in my constituency last year, the STF itself uncovered and 28 leopard skins. Now, every year there's leopard poaching in Odisha, sir. I draw the attention of the Honourable Minister that this should also be, taken into consideration. Thank you very much, sir. माननीय मंत्री महोदय, और कोई सदस्य तो बाकी नहीं बचा? खड़े हो गए मंत्री जी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बोलते हैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सदन के सभी 41 सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और न केवल भाग लिया, सभी ने एक मत से इस विधेयक के संशोधनों का स्वागत भी किया। लेकिन कभी-कभी चर्चा करते समय हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। हमारे केरल के एक IMUL के सदस्य कह रहे थे, मैन ऑन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे बोलते बोलते वो कह रहे थे कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ही बचाना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का ही होना चाहिए, एनिमल की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही सोच रहा था कि ऐसी कल्पना की जाए कि इस धरती पर न पेड़ हो, न पर्वत हो, न नदी हो, न पशु हो, न पक्षी हो, केवल मनुष्य ही मनुष्य हो, तो क्या ये धरती धरती रहेगी? और धरती पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं उसमें अगर संवेदना है, उसमें अगर सोच है, उसमें अगर सबसे ज्यादा सृजनात्मकता है, उसमें अगर सबसे ज्यादा भावनात्मक विषय है तो मनुष्य पे है। तो मनुष्य की जिम्मेदारी है कि ये धरती उसकी नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम है, सबका साथ सबका विकास, ये मनुष्य की ही कल्पना। यही हमारी कल्पना, यही हमारी भारतीयता का मूल भी है और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये जो सरकार जिस फिलॉसफी को लेकर काम कर रही है,
इस सरकार की फिलॉसफी ही भारतीयता के उन मूल विचारों को स्थापित करना है जिसके आधार पे न केवल धरती हरी भरी रहे, धरती में सब लोग सह अस्तित्व के माध्यम से रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश, ये सच है कि दुनिया का केवल 2.4% ही हमारा पास जमीन का हिस्सा है, लेकिन हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसमें 17 मेगा डाइवर्स, मतलब सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जिन देशों में है, उसमें हमारे देश का जो प्रतिशत है वो 8% कंट्रीब्यूशन हमारा बायोडायवर्सिटी को लेकर के आता है। और इतनी जो रिच बायोडायवर्सिटी है उसमें जो पर्यावरणीय संरक्षण है, इकोलॉजिकल वैल्यूज है। इकोलॉजिकल वैल्यूज का अर्थ है कि हमारे वन, हमारे ग्रासलैंड, हमारे वेटलैंड, हमारे कोस्टल और मैरीन एरिया, हमारा रेगिस्तान का इकोसिस्टम, हमारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, प्लांट्स, ये जो यूनिक सिस्टम हमारे देश का है ये सुरक्षित रहे। जब राजा जी बोल रहे थे, वो पूर्व पर्यावरण मंत्री रहे, तो उन्होंने कहा कि ये आप एक नई मैनेजमेंट कमेटी क्यों लेकर के आए और साइंटिफिक कमेटी का अर्थ क्या है। जब ऑलरेडी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हम 1970 के दशक से साइटिस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है, वो भारत रहा है। आज दुनिया में जो अभी लेटेस्ट बॉन में सम्मेलन हुआ है, बायोडायवर्सिटी के सस्टेनेबल यूज को लेकर के जो साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है, वो हम सब लोगों के लिए आंख खोलने वाली है। 50,000 से ज्यादा फ्लोरा और फोना का डे टू डे अपने जीवन में फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए मनुष्य लगातार इस्तेमाल कर रहा है। उसमें मैरीन से लेकर सब फ्लोरा और फोना है। इसका सस्टेनेबल यूज कैसे हो, इसका सस्टेनेबल कंजम्पशन कैसे हो, और इसलिए सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल यूज जितनी भी चीजें हैं उसका सबसे बड़ा करने का ये जो संकल्प है, ये भारत का संकल्प है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये बताना भी चाहूंगा कि पिछला जब कॉप हुआ था, दुनिया में जो तीनों सबसे बड़ी कन्वेंशन चलती हैं, UNFCCC की दुनिया के जलवायु तापमान के विषय को लेकर के, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड को लेकर के, जिसका पिछले दिनों कॉप एकदम ईस्ट अफ्रीका में जो आइवरी कोस्ट कोटे डोर जिसको कहते हैं, उसमें आबेजान करके उनके शहर में हुआ, और तीसरा बायोडायवर्सिटी का है। इन सब विषयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को एक मिशन दिया है, मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल का अर्थ यह है कि जितनी भी बायोडायवर्सिटी हमारे पास है और दुनिया में है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक नियमों की व्यवस्था होनी चाहिए। और साइटिस का जो हमारा जो एग्रीमेंट हमने साइन किया, उसके लिए अगर इसका एक्सपोर्ट होता है तो उसके प्रॉपर संचालन के लिए, उसके प्रॉपर निर्यात को महत्व देने के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी को बनाया जाना जरूरी है। वास्तव में इससे पहले ये जो काम हम करते थे, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड प्रमोशन के द्वारा और हमारे कस्टम्स के द्वारा ये सारा विषय होता था, लेकिन साइटिस का जो दुनिया में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात है, उस लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंतर्गत एक डेजिग्नेटेड मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, जिसके द्वारा ये प्रूव किया जाना चाहिए कि जो भी चीज आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको एक प्रमाणिकता के लिए, उसके सर्टिफिकेशन के लिए एक अथॉरिटी की आवश्यकता है। हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, वहां जो हमारा जो शॉल जाता है, बहुत भोला जानवर हमारा जो तिब्बत का जो जानवर रहता है, अभी डची गांव का भी उल्लेख कर रहे थे। भारत के सबसे सुंदर जगहों में से एक डची गांव है, और हमारा जो वहां पे भालू है, हंगल है, वो दुनिया का सबसे यूनिक है। उसकी चिंता आप कर रहे थे, और निश्चित रूप से मैं भी डची गांव होकर आया था। इतनी सुंदर जगह, इतनी बायोडायवर्सिटी की जगह भारत में हमारे पास है। कश्मीर में बांदीपुरा में हमारे पास वलूर जैसी सुंदर लेक है। लाखों से ज्यादा हमारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, लेकिन उनका जो ये शिकार होता है और उसके शिकार के कारण जो बाकी सारा जो चीजों में प्रयोग होता है, इसके लिए कोई एक सर्टिफिकेशन
प्रोटेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम अपने देश से किसी भी चीज का अगर निर्यात करेंगे तो हम ये प्रमाणिकता देंगे कि हमने उन एंडेंजर्ड स्पीशीज का, उन लोगों का अनावश्यक शिकार नहीं किया है जो केवल हमारे अपने लाभ के लिए, अपने लग्जरी के लिए हो। इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है, यह हमारे भारत की संकल्पना का दायित्व है, यह हमारे बायोडायवर्सिटी के साथ अपने जीव जंतुओं को हम अपने लग्जरी शॉल वगैरह में इस्तेमाल ना करें, इसके लिए मैनेजमेंट कमेटी की आवश्यकता है। इसमें किसी भी प्रकार से राज्यों के अधिकारों को लेने का बात नहीं है। हमारा एक्सपोर्ट व्यवस्थित तरीके से हो, उनको संबल देने के लिए हमने मैनेजमेंट कमेटी को बनाया है। फिर आप कह रहे थे अब साइंटिफिक कमेटी की क्या आवश्यकता है। मैं ये भी जानता हूं कई बार ये जो शहतूश का जो शॉल वगैरह आता है, आखिर इसको साइंटिफिक तरीके से उसका बाल जब आप थ्रेड निकालते हैं तो WII से लेके बाकी सारे जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें निकाला जाता है। और हमारे पास देश में ZSI, WII जैसे बेहतरीन संगठन है। मेरे को ये बताते हुए खुशी है, हमारे ये जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, विशेष रूप से ZSI, BSI, अधीर रंजन जी आप कह रहे थे, ये सब कलकत्ता में स्थित हैं, 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। और आज तो ZSI के पास 1,04,000 से ज्यादा स्पीशीज का उनके पास एक पूरा उनका रिसर्च है। हमारे BSI के पास भारत के फ्लोरा और फोना का लगभग 35,000 से ज्यादा का प्लांट का कलेक्शन है। और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का परसों ही उल्लेख किया है। और ये सारा अब उन्होंने डिजिटल कर दिया ताकि ये देश की जो हमारी एक भव्य जैव विविधता और जो संपदा है, इसका ज्ञान हमारे शिक्षा के लिए सारे विद्यार्थियों को हो, सारे लोगों को हो। आखिर ये जो प्रकृति का दिया हुआ जो असीमित उपहार है, इसको हम पैदा नहीं कर सकते, इसको प्रकृति ही बना करके रख सकती है। उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए साइटिस के प्रोविजन हम इसके अंतर्गत लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो शेड्यूल है, 4 शेड्यूल को हमने पहले के जो 6 शेड्यूल है उनको हमने 4 में क्यों करा, क्योंकि ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया था, अधीर रंजन जी आपका ये कहना मेरे को उचित नहीं लगता है कि इसको जल्दबाजी में किया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयराम रमेश ही थे। 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल उसमें रिप्रेजेंटेशन है। सर इवन मैं तो ये पहली बार स्टैंडिंग कमेटी ऐसी है जिसमें 6 से ज्यादा सांसदों ने जाकर अपने बयान और विषय रखे हैं। इसकी संवेदनशीलता ऐसी है कि सबने इसमें भाग लिया और हमने भी स्टैंडिंग कमेटी को कहा कि इसको बड़े व्यापक तरीके से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के आने वाले समय में भविष्य के विषय को बनाने का विषय, जोड़ने का विषय है। और इसलिए जो पहले के जो हमारे शेड्यूल थे उसको न केवल स्टैंडिंग कमेटी ने अलग एक्सपर्ट से राय ली, फॉरेस्ट क्षेत्र में काम करने वालों के लोगों के साथ राय ली, उसके साथ ही साथ हमारे भी मंत्रालय ने स्टैंडिंग कमेटी को सहयोग किया। हमने ZSI से, BSI से, जो मेरे को लगता है WII से, जो आज के समय में भारत के सबसे बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जिनके पास साइंटिस्ट की एक परंपरा है, हमने सबको एक क्रमबद्ध तरीके से हमने बनवाया। और क्रमबद्ध तरीके से उस शेड्यूल को बनाने के बाद हमने शेड्यूल को इस प्रकार से सुसंगत किया है कि उसमें किसी भी प्रकार का अवरोध ना है। इसके साथ ही साथ जो साइटिस ने जो अपने उनका जो एनेक्सर है उसको भी हमने लगाया है। लेकिन अभी हमारे आसाम के साथी कह रहे थे कि अगर कोई साइटिस के साथ और भारत के विषयों के साथ अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बिल में हमने प्रावधान किया है कि जो भारत के बनाए हुए जो एनेक्सर है वो उस पर प्रवेल करेंगे, क्योंकि हमारी संप्रभुता सबसे ऊपर है। अपने वन्य जीवों की और अपने बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना हम जानते हैं, इसलिए हमारी जो संप्रभु संपन्नता हमारे देश की है, सॉवरेंटी है, वो इस पे कायम रहेगी। इसके साथ ही मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरिया का एक पूरी तरीके से नेटवर्क है, जो हमारे देश में न केवल पूरे देश के हेरिटेज को संभालता है, बल्कि वो हमारे देश में सबसे पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क था वो यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसको कभी हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, आज कॉर्बेट पार्क के रूप में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ आज हमारे देश में 693 जो 2012 तक हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया थे, अब पिछले 8 सालों में हमारी सरकार आने के बाद उनकी संख्या बढ़कर 987 हो गई है। इसलिए हम केवल डेवलपमेंट में विश्वास नहीं करते,
हम डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के भी आगे बढ़ने का काम करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि ईरान के शहर रामसर में दुनिया के सारे देश इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था रामसर में कि हमें अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना चाहिए। मैं अक्सर अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहता हूं, क्योंकि सारी वेटलैंड या सारी फॉरेस्ट के अंतर्गत नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि अभी बीच में हमारा एक मंत्रालय का बहुत अच्छा प्रकाशन हुआ है। मेरे को लगता है सभी सांसदों को देखना चाहिए। हमारे जो 52 टाइगर रिजर्व हैं उसमें देश के 200 से ज्यादा जो स्वच्छ पानी के स्रोत निकलते हैं। इसलिए हमारे टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए रिजर्व नहीं है, देश के अमूल्य जो जल का जो हमारा जो स्रोत है उसके लिए भी अच्छे स्रोत के स्थान है। इसलिए भी हमें उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और हम प्रोटेक्शन करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ वेटलैंड हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट के में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपने अधिकारियों को कहता हूं कि फॉरेस्ट तो हमको बचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि फॉरेस्ट हमारा हार्ट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं वेटलैंड को भी बचाना चाहिए। वेटलैंड अगर हमारा हार्ट फॉरेस्ट है तो वेटलैंड किडनी का काम करती है, वो प्योरिफिकेशन का काम करती है, नेचर के प्योरिफिकेशन का काम करती है। और इसलिए हमारे मणिपुर के जो हमारे मंत्री उन्होंने जो विषय कहा, मणिपुर में निश्चित रूप से लोकटक जैसी बड़ी झील है, इतनी बड़ी झील है जितनी हमारी कश्मीर में हमारी वुलर जैसी लेक है, और राजस्थान में हमारे पास हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इनके यहाँ सांभर जैसी लेक है, जो हमारे देश की अपने आप में माइग्रेटरी बर्ड्स को लेकर के सारी संपदा का काम करती है और इसलिए उसका प्रिजर्वेशन के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। केरल के काफी लोगों ने जो विषय है, अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो इको सेंसिटिव जोन का विषय आया है, उस इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं इस माननीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने एक विषय थोड़ा आपकी सबके लिए रखना भी चाहता हूं, क्योंकि केरल के काफी सारे लोगों ने इको सेंसिटिव जोन के विषय को उठाया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो बना, उस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंतर्गत 2002 में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनी और उस स्ट्रेटेजी में ऐसा बनाया गया कि जो जमीन जो है हमारे जो नेशनल पार्क के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर तक की जो जमीन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो नेशनल पार्क का जो इकोसिस्टम है वो इस इकोसिस्टम को खराब ना करे। लेकिन जब वो बना तो उसके संबंध में काफी सारे लोगों की आपत्ति आई। आपत्ति आने के बाद एक दोबारा से मीटिंग 17 मार्च 2005 को हुई। तब ये कहा गया जो इको सेंसिटिव जोन है वो साइट स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि केरल की अगर घनी आबादी है, उत्तराखंड की घनी आबादी है, हिमाचल प्रदेश और गोवा की घनी आबादी है, तो साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। जो हम अपनी इकोलॉजी को बचा करके और अपने डेवलपमेंट प्लान को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें एक जैसा पैमाना कहीं पर भी नहीं हो सकता है। और इस साइट स्पेसिफिक जो हम लोगों ने मान्यता 2005 में दी, उसके बाद फिर हमारे मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के गठन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सालिम अली सेंटर फॉर नेचुरल हिस्ट्री, इन सबके एक्सपर्ट की सलाह लेकर उसके बाद हमने ईएसजेड जो का निर्माण किया। और इसलिए इस समय जो देश में इको सेंसिटिव जोन जो नोटिफाई हुए हैं उसको लेकर एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पैरा ए से लेकर पैरा एच तक उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं। हम उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में भी वापस से रिकंसिडरेशन के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे को ऐसा लगता है कि ये इसमें काफी सारा क्लैरिफिकेशन नहीं है। विशेष रूप से पैरा 44 के पैरा ए और पैरा 44E में अभी क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, ताकि जो साइट स्पेसिफिक ऑलरेडी ईएसजेड डिक्लेयर हो चुके हैं, एक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनको डिक्लेयर किया जा चुका है, जहां पर एक्टिविटीज चालू है वहां पर एक संतुलन रखना चाहिए। इसलिए इस मामले के मेरिट पे मैं नहीं कहूंगा, फिर भी तथ्यों को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैं आपके सामने, बहुत सारे सदस्यों ने इस विषय को उठाया है, तो मैं एक स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि 44A और 44E के क्लैरिफिकेशन के लिए मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन को फाइल किया है और निश्चित रूप से हमारा यह कहना है कि उस कंटेंट को देखा जाना चाहिए। दूसरा एक और जो विषय आया है वो सेक्शन 62 में बार बार किसी भी
वन्य जीव को वर्मन करने की बात है। ये निर्णय कभी भी असंवेदनशीलता के साथ नहीं लिया जा सकता है। मैं मानता हूं और मेरी उन किसानों के साथ पूरी संवेदना है जो विशेष रूप से जंगली सुअर के आतंक से जिनके खेत प्रभावित होते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये और जो टाइगर सेंचुरी है दोनों नजदीक हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन, अगर आप एकदम वर्मिन करेंगे तो जो उसका प्रे एरिया जो टाइगर का, उसको भी वो इससे अपना जो भोजन उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। उसके लिए एकमात्र प्रावधान है, मिनिस्ट्री ने फरवरी में 2021 में गाइडलाइन निकाली, उसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ने फिर गाइडलाइन निकाली है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह अधिकार भी दिया है कि वो चाहे तो अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं और केरल में इसका 10 से ज्यादा बार निर्णय का प्रयोग भी किया जा चुका है। और मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से संतुलित विकास आवश्यक है उसी प्रकार से अगर कोई भी जानवर हमारी फसल को क्षति पहुंचाता है तो उसके बारे में हमने पूरा सेंसिटिव तरीके से वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग पूरी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा हम एक और विषय लेकर के आए हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को मान्यता प्रदान करती है। हम चाहते हैं कि उनके सारे अधिकारों का सेटलमेंट अगर होगा, क्योंकि हमारा देश का जो फॉरेस्ट है दुनिया के अन्य देशों के फॉरेस्ट से अलग है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। हमारे कल्चर में फॉरेस्ट के लिए पूरी तरीके से आत्मीयता का भाव है। और ये जो सिंह संरक्षण का, जो हम टाइगर कंजर्वेशन का जो उल्लेख करते हैं, ये महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर जी के द्वारा भी इस विषय का उल्लेख आता है। हमारे देश में एक पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बिल के माध्यम से हमने एक और विषय तय किया है कि जो नेशनल पार्क में जब हम कई जगह पे डिक्लेयर करते हैं तो देखने में आया कि वहां पर रहने वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वहां पर रहने वाला जो परंपरागत समाज है, उनको तुरंत ही एकदम से हम जाने को कहते हैं। हमने इस बार उसमें एक प्रावधान लगाया है कि तुरंत उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। जब तक उनका विस्थापन पूरा नहीं हो जाएगा, उनके ग्रेजिंग राइट, उनके ड्रिंकिंग वाटर राइट वो पूरी तरीके से सलामत रहेंगे। विस्थापन का अर्थ है कि एक डिग्निफाइड लाइफ उनको दी जाए। अपने जीवन का जब वो पुनर्स्थापन कर रहे, अभी कुछ दिनों पहले मैं तड़ोबा में गया, अंदर पूरा गांव खाली हुआ और अभी और भी गांव की प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहते। हजारों साल से वो लोग वहां पर रहे हैं, उन्होंने उस जंगल को बचाया है। उस जंगल के प्रति एक संवेदना करिए। आप कभी गिर में जाइए, हमारे मालधारी भाइयों को देखिए। हम जिस जगह पे रह नहीं सकते वहां पर वो शेरों के साथ उनके रहने का एक तादम्य का उनका एक जीवन है। हमारे सरिस्का में जाइए, सरिस्का में हमारे जितने भी गुर्जर समाज के, मीना समाज के गांव है, मैं उन सब गांव में घूमता हूं। लेकिन हमारे विस्थापन का अर्थ है कि उनके परंपरागत जो राइट्स है उनको हम एक कैंची के साथ नहीं काट सकते, एक कैंची के साथ उद्घाटन नहीं कर सकते। वो उनकी जीवन शैली है, हम उनको निश्चित रूप से एक सम्मान पूर्वक जीवन देना चाहते हैं। तब तक उनके ड्रिंकिंग और गेजिंग राइट, उनके चारागाह के जो राइट है इस बिल में हमने, ताकि फॉरेस्ट विभाग के साथ किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निर्देशन में चलती है, उसका सबसे पहला जो कार्य है वो गरीब के हितों की रक्षा, गरीब का कल्याण और इस देश के वनवासियों के जीवन में संवर्धन और सुरक्षा लाना, ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व रहता है। हमारे काफी सारे माननीय सदस्यों ने बहुत सारे विषयों को अपने अपने तरीके के माध्यम से रखने का प्रयास किया। हमारे जो शुरू करा था वो शुरू हमारा प्रद्युत बारदोलाई जी ने किया था, वो यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जो बार बार और भी 2-3 सदस्यों ने जो जामनगर के ट्रस्ट का विषय उठाया, मैं आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहूंगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने रेगुलेशन को मान्यता दी है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी ने भी कर्नाटक के जजमेंट को अपहोल्ड किया है। और यहाँ पर जब स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी ये विषय गया था, विशेष रूप से हाथियों को लेकर के विषय गया था, तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस देश में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा रही है। हमने अगर हाथियों का पालन किया है तो हमने उसको सम्मान के साथ किया है। केरल से लेकर के बाकी सारी जगहों पर हमने हाथियों को अपने जीवन शैली के साथ अपनाया है और इसलिए हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट में किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन को मना किया है। रेगुलेशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, उसमें हम हाथियों के संरक्षण को उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे। केवल रेगुलेशन रहेगा, ये हमने निश्चित रूप से किया है। ट्रांसपोर्टेशन के विषय को भी किया है।
और आप तो आसाम से हैं, आप जानते हैं कि हाथी पूरी तरीके से सबसे बुद्धिमान प्राणी है। और इस समय हमारे देश में जो हमारा आपने जो संख्या दी है, मुझे लगता है वो संख्या कम है। अभी तुरंत ही 32वां हमारा जो एलिफेंट का एक और रिजर्व हमने डिक्लेयर किया। टोटल 65,000 किलोमीटर एरिया हमारा हाथियों के लिए है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अगर दुनिया के 75% टाइगर जो हैं वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाटिक हाथी है वो भी हमारे देश में है। और अगर 100% एशियाटिक लायन है तो वो भी हमारे देश में है। हम 130 करोड़ लोगों की जनता होते हुए भी इतने संवेदनशील भारतीय हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से अपने वन संरक्षण का और अपने वन्य जीवों के संरक्षण को जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि विकास और पर्यावरण दोनों अपने आप में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। समुचित विकास वही कहा जाएगा जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास हो। और इसलिए विकास के मायने में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम भी अपने वन्य संरक्षण के मामले में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर हम ये चाहते हैं कि उन सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर नई उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो हमारे विकास को प्रभावित ना करे, लेकिन विकास को संवर्धन करने का काम करे। जहां तक हमारे सौगत राय जी ने सुंदरवन के लिए कहा है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन उसकी चिंता अधीर जी आपको करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पैसा पूरा खर्च नहीं हो रहा है। कभी कभी इस बात के समाचार आते हैं। सौगत राय जी को थोड़ा बुरा लगेगा, अभी खड़े भी होंगे, लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है। इसका उपयोग हम किस प्रकार से करें। और ये एक और है कि भारत का एमओयू बांग्लादेश के साथ सुंदरवन के संरक्षण हेतु है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता के आधार पर संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं सौगत राय जी, चाहे आप हो, चाहे अधीर जी हो, चाहे मैं हूं, सुंदरवन इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे यूनिक प्लेस है। ऐसा यूनिक प्लेस है, दुनिया में इससे बढ़िया मैंग्रोव का जो कोई स्थान नहीं है। उस सब का संरक्षण ये हमारे देश में न केवल हमारी जिम्मेदारी है, ये डायरेक्शन भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हमको मिल करके उसको बचाना चाहिए। सेम ऐसे जैसे मैंने डची गांव के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कहा, हमारी ये ऐसी संरक्षण की जगह है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। उसके साथ ही साथ एक और विषय जो आया है वो साइटिस की मैनेजमेंट अथॉरिटी को सलाह देने के लिए साइंटिफिक अथॉरिटी में मैं आपको ये यहाँ भी स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई प्राइवेट साइंटिफिक अथॉरिटी नहीं होगी। इसके लिए हमारे मंत्रालय में WII, BSI, ZSI, ICFRE, IFGTB जैसे हमारे शासकीय संस्थान हैं, और सारे संस्थानों में हमारा कार्य करे, उन्हीं का ही साइंटिफिक अथॉरिटी के रूप में विषय रहने वाला है। लक्षद्वीप में कोई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। मोहम्मद फैजल जी, आपका जो विषय था, एक जो रेड सेंडर्स की बात जो हमारे आंध्र के लोगों ने जो उठाई थी, इसका भी एक्सपोर्ट जो है साइटिस की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा ही किया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, विशेष रूप से हसन मसूदी साहब जो थे उन्होंने, और जो अगाथा संगमा जी ने भी जो विषय उठाए हैं, वो सारे जो संरक्षण के प्रिजर्वेशन के संबंध में सब विषयों को हमने इस एक्ट के अंतर्गत पूरी तरीके से समावेशित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरीके से पर्यावरण और विकास दोनों विषयों के संतुलन के साथ चल रहा है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि पिछले दिनों इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें पहली बार दुनिया ने भी स्वीकार किया कि जंगल केवल टूरिज्म के लिए नहीं है, जंगल मनुष्य के मन की शांति के लिए भी है। जो बात भारत अपनी संस्कृति में कहता रहा है, वो बात अब आज दुनिया भी स्वीकार करने लगी है। और इसलिए मुझे आपके सामने बताते हुए खुशी है कि हमारे देश में न केवल प्रोजेक्ट लॉयन, न प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सफलतापूर्वक हमारे मंत्रालय द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा देश पूरी तरीके से वन्य जीवों के अपराध और उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हम ये मानते हैं कि वन्य जीवों का जो अपराध होता है और विशेष रूप से जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया जाता है,
मुझे लगता है कि देश में इस प्रकार की एक भावना को जगाने की भी जरूरत है कि इनका प्रयोग कम से कम जो हमारे लग्जरी आइटम, हमारे शॉल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उसमें इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये वन्य जीवों को केवल इसके लिए मारा जाए, ये कोई भी अच्छी मनुष्यता की उपलब्धि नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मैंने केवल जो 41 के 41 सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, उसमें सरकार की भावना को और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विभाग के द्वारा जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उसको सामने रखने का प्रयास किया है। मैं चाहूंगा कि सर्वसम्मति से सदन इस बिल को पास करे, ताकि भारत दुनिया में आने वाले समय में जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, उसको अच्छी सिद्धता के साथ कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किताब तो इतनी मोटी थी, माननीय सदस्यों को लगा कि किताब देखकर ही माननीय सदस्यों को लगा बहुत लंबा समय लगना है। सुप्रिया सुले जी। सर, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन। आपने कहा पर्यावरण और विकास का साथ रहेंगे, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, लेकिन आरे का जो इशू आज महाराष्ट्र में चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या मत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कारशेड के बारे में विरोध कर रहे हैं, और वो पहला निर्णय आपकी सरकार का है आने के बाद महाराष्ट्र में, तो इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेट। आरे फॉरेस्ट सारी स्वीकृति जो संविधान और जो नियम है उसके अंतर्गत ही दी गई है, कोई नियम से बाहर किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। अधीर रंजन जी। भूपेंद्र जी, वो जो आपने जयराम रमेश जी की बात कर रहे थे ना, मैं कहा था कि सिविल सोसाइटी की राय है। जयराम रमेश ने सिविल सोसाइटी की शंका प्रकट किया था कि और जरा विस्तार से चर्चा करने में एनवायरमेंटलिस्ट ओबी का उन सबका ये राय था कि और ज्यादा चर्चा करने में अच्छा होते। मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपकी जमाने एक मिनट आप बैठिए, हो गया ये जो मैं नहीं आप जैसे सवाल नहीं किया, सवाल नहीं, मैं खत्म नहीं किया। अधीर जी, मैं खत्म सवाल नहीं किया। सवाल पे तो मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं बताता हूं, देखिए स्टैंडिंग कमेटी के सामने WWF, डायरेक्टर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जी, ये सारे साइंटिस्ट, आप ये देखिए खुद स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखिए 150 से ज्यादा सोसाइटीज और लोग इंडिविजुअल अपीयर हुए हैं। सरकार तो पूरी तरीके से कंसल्टेशन कर रही है, हम कभी भी कंसल्टेशन को मना नहीं करते। ये व्यापक कंसल्टेशन और सहमति के साथ आया हुआ बिल है, इसलिए मैं आपकी इस तथ्य को नकारता हूं कि कोई व्यापक कंसल्टेशन नहीं हुआ। सभी लोगों से, सभी पक्षों से व्यापक कंसल्टेशन हुआ है। देखिए, हम लोग भी ये समर्थन किए हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी के कहना कि और हमें थोड़ा मौका देना चाहिए। हमारा काम है सदन के सामने, मंत्री के सामने बात रखना। मैं आपको और मैं जो सवाल पूछना चाहते थे कि आप ये कितने सारे प्रोजेक्ट्स को आपने रिकमेंड किए हैं फॉर क्लियरेंस के लिए जहां प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, प्रोटेक्टेड एरिया में कितने सारे प्रोजेक्ट, जंगल में कितने सारे प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो रहे हैं? ओके, आपकी तथ्य के अनुसार राजा जी, ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन जारी किया। सर, मिनिस्टर हैज रिप्लाइड माय क्वेश्चन। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर हैज रिप्लाइड माय क्वेश्चंस. I want to submit before the House through you, sir. I am not doubting the integrity of the ministerial action to incorporate the management authority and the scientific authority. The only thing is you want to constitute these two authorities to satisfy the international conventions. You want to transport the provisions here. But what is lacking is regional eco requirements, state requirements, Gram Sabha requirements, Panchayat Raj institution requirements. These are all properly reflected in the Act. That is why I am submitting before the minister that some requirements will be. Number one. Number two, thank you for the minister. That number two, no, sir. One. No. You promise eco. No, Nishikant Dubey ji. No, please. धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। मैं जिस इलाके से आता हूं अध्यक्ष महोदय, वहां इस देश का सबसे बड़ा धरोहर है, 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है हमारे यहाँ। लेकिन वो पूरा का पूरा जो गिट्टी माफिया है, उसने उस फॉसिल को खत्म करने का फैसला कर रखा है साहबगंज जिले में, मंडरो में अभी हमने बनाया है। दूसरा,
उस पूरे पहाड़ को खत्म होने के बाद हमारे संथालपना, मैं पूरे संथालपना की बात कर रहा हूं, प्रत्येक 15 दिन में हाथी आते हैं और हमारे आदमियों को मार के चले जाते हैं। और एक भी प्रोटेक्टेड वहां कोई जंगल नहीं है, नेशनल जंगल नहीं है, ना फॉसिल का हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, ना उसको कर पा रहे हैं। और दूसरा है सर कि जो दूसरा सवाल इन्हीं गुमान सिंह डामोर, नो सिंगल वन, गुमान सिंह डामोर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आप अगर डायरेक्ट बोलते रहते ना तो ठीक था, नंबर 2 बोलते रुक जाता है। जनजाति जंगल और वन्य प्राणियों का सदियों का साथ रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने बोला है कि ड्रिंकिंग वाटर और ग्रेजिंग का अधिकार दिया है, तो हमारा जंगलों में जो जनजाति के पूजा स्थल है उनका भी संरक्षण होना चाहिए। ओके, दूसरा सुनील सिंह जी, दूसरा दूसरा बोला ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इतने वरिष्ठ सदस्यों को इतनी बार समझाया, समझदारी से, बस समझे नहीं वे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोकसभा के अंतर्गत 3 रिजर्व फॉरेस्ट आते हैं। एक तो पलामू टाइगर रिजर्व, जो देश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जहां 1924 में पहले बार पूरे दुनिया में बाघों की गिनती हुई। आप तो पूछो प्रश्न क्या है। दूसरा लावालॉन्ग वाइल्ड सेंचुरी और तीसरा भेड़िया। दूसरा नो प्लीज भेड़िया। नो प्लीज मान्य। मैंने एक सवाल उठाया था, सबके साथ न्याय। सर मंत्री महोदय जवाब नहीं दिया कि पश्चिम बंगाल में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। झारखंड से हमारा बंगाल में हाथी घुस जाता, मिदनापुर में। हाँ, वो जो ये है जमशेदपुर का पास से हाथी आता है, एकदम खेती खराब कर देता है, लोगों को मार देता है। और उत्तर बंगाल में भूटान से हाथी आते हैं, तो हमें हाथी से बचाने के लिए सरकार क्या? ओके, दानिश अली जी। सर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जिक्र हुआ है यहाँ पर। सर, वहाँ अभी पिछले दिनों मेरे क्षेत्र का ही एक लड़के को जो है मतलब बाइक से जा रहे थे और पीछे से झपट्टा मार के लेपर्ड ने, मतलब उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली सर, हाथ मिले। तो मेरा आपके माध्यम से सिर्फ मंत्री जी से ये सवाल है, क्या ऐसे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पर हम लोग कोई मतलब आप सभी अनुभवी लोग हो, आप इंतजाम जो सवाल पूछते हो बिल से संबंधित तो नहीं पूछ ले। कोई के जंगल हाथी घुस गया, कोई के हाथ ले गया। सर मैं वही इनके प्रेमचंद्र जी पूछेंगे, चलो बैठ जाओ आप। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, my question is pertaining to the elephant. That the Schedule 1, Part A, mammals. The first item is Asiatic elephants. I would like to know from the Honorable Minister as a clarification whether this will be adversely affecting the tamed elephants, because I've already made in my speech that in Kerala, the cultural festive of Thrissur Puram, like UNESCO approved programs, cultural programs, and it is a part of the rituals of the people throughout the country, especially in Kerala. In such a situation, whether tamed elephants or the domestic elephants will be protected out of it, whether it will be as Asiatic elephant, excluding the tamed elephants, such a clarification is required, such an amendment is required. I would like to seek the clarification from the Honorable Minister. Okay. Pradyut Borodolai ji. Sir, I just want to draw the attention of the Honorable Minister. मंत्री जी सक्षम है इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। Thank you very much, sir. Sir, actually the treatment of connectivity is an integral part of wildlife management. The original law of wildlife protection, sir, let me speak. Wildlife Protection Act, either Wildlife Protection Act 1972 or even your amendments have failed to define the corridors. Corridors are an integral part. Sir, it would be very important that corridors and maintenance and treatment of connectivity should be given in the amendments. Thank you, sir. No, माननीय मंत्री जी, आप जब वन मंत्री थे जब कर देते बैठ जाइए आप। मैंने इजाजत दी थी, आप दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। माननीय मंत्री जी, नो।
there will be no inconsistency regarding the protection of our buffer zone is concerned. The matter is sub judice in the Supreme Court. As per the clarification of the direction of section 44A and 44E is concerned, that matter is again before the Supreme Court. We filed a review. So many other states also filed review on the same line. So it's a matter is sub judice. So I don't want to be discussed in detail. जो दूसरा विषय अधीर रंजन जी ने कहा है, जहां तक प्रोटेक्टेड एरिया हमारे देश के सवाल है, अगेन आई रिपीट, द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन द कंट्री विच स्टूड एट 693 इन ईयर 2012 हैज राइजन टू 987. दिस अकाउंट्स ऑफ 5.2% ऑफ द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिक एरिया. और हम पूरी तरीके से उसको बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं. एक और जो विषय यहाँ पर हमारे राजा जी ने जो विषय रखा था, इस बिल के अंतर्गत जो मैनेजमेंट का विषय है, मैनेजमेंट के विषय में हमने पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन मैनेजमेंट कमेटी. द बिल हैज इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम विलेज पंचायत, ग्राम सभा, हु कैन बी ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, देयर बाय increasing greater participation of these bodies in the management of community reserve. हमने ये पूरी तरीके से इस बिल के अंतर्गत करने का विषय कहा है. जो हमारे निशिकांत जी ने जो विषय उठाया है, वो जो हाथियों वाला विषय है, ये पूरा एक कॉरिडोर बना हुआ है जो झारखंड से शुरू होकर और बंगाल में हमारा जो बांकुरा और ये जो जिले से मेदिनीपुर होता हुआ फिर उड़ीसा की तरफ एक जाने का रूट बना हुआ है. अभी पूरे तरीके से WII के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट पे हमारा काम चल रहा है और लगातार उस पर काम चल रहा है. रेलवे के साथ भी लगातार हमारे मंत्रालय की बैठकें हो रही हैं और WII के साइंटिस्ट ने कुछ नए विषयों को भी सुझाव किया है. हम आशा करते हैं इन कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग निश्चित रूप से इस जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम करने का प्रयास करेंगे. जिम कॉर्बेट में ये जो मैन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसी का विषय है और लेपर्ड की जो संख्या है उसकी बढ़ोतरी शहरी क्षेत्रों के साथ भी है, तो उसकी पूरी तरीके से चिंता की जा रही है. हमारे वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है और वन विभाग के अधिकारी बहुत ही उचित समय पे पहुंच करके उस विषय को कर रहे हैं. यही कारण है कि जो प्रद्युत बरदोलाई जी ने जो एनिमल कॉरिडोर की बात कही है, क्योंकि अभी जो जैसे जैसे नेशनल पार्क घोषित हुए उसके बीच में मानवीय बस्तियां भी आ गई हैं, जहां स्वाभाविक रूप से कॉरिडोर की स्थिति है उस पर पूरी तरीके से हमारे विभाग के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है. लेकिन हमें दोनों के बीच में जो संतुलन बनाने का विषय है उसको लेकर के चलने का काम है. लेकिन इसके बनने का जो एक लाभ रहता है कि कम से कम जानवरों का जो मूवमेंट है, विशेष रूप से हमारे टाइगर रिजर्व जो एलिफेंट रिजर्व है वो इस तरीके से उनके स्वाभाविक आने जाने के रास्ते से जुड़े हैं. पर इसमें हमें बड़े संवेदनशीलता के साथ निर्णय राज्य सरकारों की अनुशंसा के आधार पर भी, स्थानीय समुदायों के सहभाग के आधार पर भी और जितनी परिस्थिति और जितनी जगह हमारे वन क्षेत्र की रहती है उसके हिसाब से ले रहे हैं. ज्यादातर कनेक्टिविटी हो इसकी हम विषय की बात करते हैं. सुनील कुमार सिंह जी ने जो विषय कहा है पलामू का जो टाइगर रिजर्व है उसके साथ अभी उसमें जो टाइगर की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे वन विभाग के द्वारा विषयों को पूरी तरीके से ध्यान में लिया जा रहा है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में भी एक हम लोगों ने पूरा डाटाबेस तैयार करने को कहा है, ताकि हमारे 52 टाइगर रिजर्व्स का जो अभी मुझे बताते हुए भी खुशी है कि 52 में से हमारे जो 16 टाइगर रिजर्व्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी मिला है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है. लेकिन उसके साथ ही साथ जो बाकी के जो जहां जो विषय उनको पूरा करेंगे. नीलगाय का वही विषय है कि अगर किसी स्थान पर यह विषय है तो स्टेट के वाइल्ड लाइफ वार्डन को अधिकार है सेक्शन 1114 का प्रयोग करते हुए वो पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सकते हैं. राज्य अनुसार स्थिति के हिसाब से किया जाएगा. इसको एक केंद्रीय स्तर पर करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा, ना ही करना चाहिए. राज्यों के वाइल्ड लाइफ वार्डन को जो हमने ऑलरेडी फरवरी 2021 में गाइडलाइन निकाली है उस गाइडलाइन के हिसाब से करना होगा.
आपने जो केरल के हाथी की बात कही है, हमने जो रखा है एशियाटिक हाथी रखा है, जो आपकी चिंता मंदिरों वाली, वो सब सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करिए। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्यगण, विधेयक पर खंडवार विचार किए जाने से पूर्व मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने दिनांक 20 जुलाई 2022 के नोटिस द्वारा ये सूचित किया है कि सरकार इस विधेयक के खंड 5 को विधेयक से हटाना चाहती है। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 3। जी, मैं संशोधन के लिए प्रस्तावित करता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री संशोधन स्वीकृत। रितेश पांडे, संशोधन संख्या 55। संशोधन संख्या इसलिए मूव करना चाहता हूं सर, क्योंकि इसमें बिल में कुछ ऐसे एक्ट्स हैं और ऐसे क्लॉजेज हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए भी दिए गए हैं, तो इसलिए इसमें बिल के नाम करना नहीं करना आप? जी हाँ, मैं इसको मूव कर रहा हूं सर। अच्छा, प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 55 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। श्री N.K. प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 33 और 34। Sir, this is amendment to the definition of person. My suggestion is shall include any natural person or legal person. It is a positive amendment. Kindly accept it, sir. प्रश्न ये कि N.K. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 और 34 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री रितेश पांडे, संशोधन संख्या 56 से 58। सर, आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि श्री रितेश पांडे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 से 58 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री डीन कुरियाकोस, संशोधन संख्या 59। आई एम मूविंग द अमेंडमेंट्स। प्रश्न है कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। श्री रितेश पांडे, संशोधन